Yeah, hello, good evening, friends. Sorry for late. Good evening once again, each and everyone. Welcome to Unacademy, which is the largest online education platform for GATE, Computer Science, and IT. Today, we are going to see the 100 important questions where we might be practiced somewhere else, but I brought all 100 questions into one place to practice various problems or various concepts in C programming in one place in one session. So whenever you want to revise this C programming, I think these 100 questions will help you to understand most important points at one place. Okay, so let me introduce myself. If anybody is coming to this channel first time, let me introduce myself, Maleshuk Devasane. I have secured all year rank 119 and 210 in BTech 4th year and 3rd year respectively with self preparation. So I just feel that the most of the students what they are going to face, I used to speak in my classes when I solve the questions how we should interpret every question, but even once in a while I am also lack in some of the concepts, but that's okay. But most of the time I used to say you have to follow this question in quickly or you should go very slowly. That depends on the concepts. Yeah, I have completed MTech from IIT Bombay. Then almost I have 12 years of teaching experience in GATE. And then now I'm going to take here on this channel a TOC compiler C programming. And even though I know other subjects that I can't handle more than two effectively at a time. So my referral code here is Deva Life. This will get 10% of discount on an Unacademy subscription. Also, you will get a guidance. In case if you are interested anytime to take the subscription, let me know. This is my referral code Deva Live. Yeah. Good evening, Bandana, Kush. Good evening, Riya. Good evening, Shashwat. Good evening, Satyajit. Good evening. I'm sorry, guys. I know you are waiting for much time. How much time left, Vivek? Right. Did I miss anyone? Yeah. Mukherjee, good evening. Chakraborty, good evening. Some people never accept delay, but they can delay in their life, but they don't allow somebody delays. Somebody comes late. Yeah. Chakraborty, good evening. And we should accept sometimes, yeah. We have so many works in the world. Good. Yeah, these are my classes on Unacademy, CTOC compiler algorithms. And we have various YouTube channels from Unacademy like electrical, mechanical, civil. We have various YouTube channels. Please share with your friends. They can also learn freely like you. And most of the channels are very interesting here. And please let the people know about our channels so that we can give some kind of concepts freely on these channels. And what are advantages coming to the plus? That is, you will practice new questions and you will have regular courses, you will have revision courses, gate questions, and most of them you will be having on plus in structured manner. So you will have a live classes. That is the most important thing. And if you are going to the physical classes, that of course these days are very difficult. But why Unacademy is so popular in India? The reason is not because of money, not because of anything else, not because of advertisements, guys. It's because of educators, that all top educators are at one platform, that is Unacademy. So you are going to learn concepts from good educators, right educators, experienced educators, and these things are going to help you to learn the concepts. Is that clear? So this is what the live classes fund of Unacademy. And you will have various courses that I said, crash courses, regular courses, complete courses, and GATE previous year questions courses. And so many are there for a single subject waiting for you, and weekly tests that will help you to revise the concepts every week, and doubt solving, and classes that are there in both English and Hindi. तो बहुत बार ऐसे होता, कुछ लोग को हिंदी आता सही से, कुछ लोग इंग्लिश समझ में आता, तो we are there to teach in both whenever you require, and mostly it's a mixed concepts are there. And rank improvement batches, iconic, all the benefits of plus. Additionally, we'll have a guide and study plan, study booster sessions, and personalized test analysis, preparation study material. So these things are going to be very difficult for students who are just taking the plus. Some people from second year, first year, third year, they want to prepare from
for GATE. So for those people, the guide are required to tell them what to study, what not to study, how to study, and these things Iconic is going to help for those people who require the support of the guide and analysis. Yeah. So if you look at the plans, the plus is having very popular plans like 1.5 year, 2 years are very popular, and then only you will understand how to learn all the subjects in minimum at least 1 year. Those people who are coming for 6 months, 3 months, maybe they have studied already, they want to quickly revise, that's okay. But this is recommended minimum 1 year, 27,225 after applying DEVA Live code. And for 1.5 year, 34,650, for 2 years, 39,600, and don't forget to apply DEVA Live. And when it comes to Iconic, the 1 year, 2 years, which is recommended and which is also very popular, 45,225 for 1 year, 66,600 for 2 years. Okay guys, almost we are near. Yeah, good evening. Yeah, Nishu always encourages others. Good evening. Good evening, Nishu. Abhishek, good evening. Piyush, good evening. Vivek, good evening. Prerna, good evening. Martha, Raj Kumar, good evening. Vivek, you are waiting. Anvesha, good evening. Shubham, good evening. Dikshita, very good evening. Yeah guys, good evening to all. Surbi, good evening. Let's move on. This is Unacademy GATE CS channel. You can subscribe to this Telegram channel to get the regular updates from us, and please try to subscribe to this to get updates from us. And we have various subjects. Please follow us to learn all the subjects at one place. And please like the session if you have not liked, and somebody disliking, that's okay, because of you dislike us, that's okay. But who are following us, please keep on liking us. We are here to help you, and we always try to help you. Whether you come to these sessions or not, we are there for a year all the time. Yeah, Sweta, good evening. Let's begin today's session, guys. Thank you so much for coming this night, and let's have a practice. Whether you see these questions or not, the most important questions at one place, which will help you to revise the entire subject. Right? Mostly my focus is on arrays. Guys, look at arrays where the people lack much pointers, and then recursion, and then loops. This is the most my focused area out of these 100 questions. Some of them are GATE questions, and some of them are questions that you might be seeing in previous sessions, but all questions at one place will help you to revise the concepts quickly. So, but when you see the answer, when you see the question, don't answer quickly. I might be updated some data from somewhere, right? Some line. So be careful, do not answer very quickly. All right. Yeah. Pratiksha, good evening. Can we begin, guys? Let's move. Let's move. And you know, in data structure, in C, we have concepts, even though we forget to answer these questions. Okay, quickly I do it because 100 questions we have to do. If you have any problem, refer my old classes in C programming on this channel. It will help you quickly. So how quickly we can solve, we'll see it sometimes. Array be declared with n integers. We have n integers here, but we wanted to find a of I. So how do you calculate that? Do you require total size of array in a single one dimensional? Not required. What do you require? Size of the element required. So a of I address is equal to address of a of 0 plus, and you are going for I because index starts from 0. This I refers 0 to I minus 1 elements we need to jump. That means to reach a of I element. So I elements are there before, you need to add them to a of 0 along with its size. Size of integer, because every element is integer. So yes. So what is the answer? Do not forget, because some people, they remember the formulas, they don't know where is the size of n, they don't know where is the plus and minus. So don't try to remember formula, try to understand the concept formula automatically derived. Let's move on. Let's move on. If any mistake happens, let me know immediately. I will cross check. Yeah, now it comes to row major order. Array be declared with n integers, indices from x to y. X to y. This is x and y. And they wanted to find the address of a of y. A of I. But here to here, how many elements are there? It must be important, guys. I minus 1 is the before I.
So x2 I minus 1 elements. How many elements? That is I minus 1 minus x plus 1, and it is I minus x elements are there before index I. So how do you compute it? That first element address, assume A is address of the first element. So A is the address of the first element. So A plus A minus x total elements into size of each element, that is integer. So this is a calculation of address of A of I. So where is that? Yes, option B is the right. Exactly. So keep on doing very quickly. We need to move to a lot of questions too. Yeah. Let an array be declared as int amn. This mn is, we are not accessing, is size. It indicates size, guys. Total number of rows. This is a declaration only. Sizes they indicates. Total mn elements we have. M rows and n columns you can assume. And find the address of A of ij. You know, always keep some intuition in your mind. What kind of intuition? Just make a picture like this. Make a picture like this all the time, because you are going to access a particular element here. And here, quickly, that you understand, this is your A of ij, and this is I row and j column. But look at this is going to be asked for C. I forgot to say that it is in C language. Or its index begins from 0. Then it starts from 0, and you will have, there is a before column j minus 1, there is a before row, that is I minus 1, that starts from 0. Total 0 to I minus 1, I rows are there before. Everyone? And how do you calculate here now? How do you calculate here now? Here, how many elements are there? I rows, each row has n elements, each row has n elements. I rows, and each row has n elements. N elements, that n could be 100 or 1000, some constant. So I n elements, I into n, and in the same row, how many elements are there till here? Here j elements are there in the same row, j elements. So total number of elements, how do you calculate? I into n plus j. These are the elements, total elements before that A of ij. So what do you do? Address of A of 00 plus in plus j into size of int. That makes the how to calculate the address of any element. Yes. Good evening, Ravi Gupta. Yes, C is correct. Good. Let's move on. And you need to practice. Don't forget that column major order you have to practice. Index starts from any other than 0. Index may start from 1. Index may start from minus 100. You require to calculate accordingly. This is I'm following C language, and you need to follow 0 index. Yeah. Whenever I say start from minus 1 index, please do that. C programming and 2-dimensional address of A of 0, address of first element. You can use the previous formula, you can calculate that. That is address of A of 00 plus, what was the formula we have used? I into, that this is going to be multiplied, plus j is here, and into size of int. Did they mention any size of int? Not mentioned. So just write size of int. And what is mentioned? Address of A of 00 2000 plus I is not mentioned. So write 100i or I into 100 plus j into size of int. Exactly replace whatever is known. So which is equal to C. Again C. Yes. Keep doing that. If anybody do not know how to calculate, please watch the array class in my C programming course. Yeah. Now this is kind of question we have practiced already, but most of the people, they are doing the mistake because they are assuming sometimes it is gate question, sometimes they are remembering the answer, option A is right, option B is right. So please don't do that. Follow the concepts, because in tomorrow the same question will not come. Yeah. It is 2D. It is 2D. And we have 1, 2, 3, 4, 5, 6.
And they mentioned anything? Yeah, 65514 is the base address and 2 bytes for integer. So 65516, 65518, the last one, that is 65520, 65522. No need to write. If anybody not able to calculate, I'm just talking about it. Yeah, this is array X. Now let's start. What is X? X has to be definitely the 65514. It is a name of X, is name of array 2D, but is also address of X of 0 by default. It is a row 0 address also. And X plus 1, X plus 0 means first row, and X plus 1 means it is going to be address of X of 1. That is also 65520. It is same as the same address that you have the first element in the second row. Yes, but also it is referred as the name of the array. It is also referred as address of that name of, not array, name of row and address of the row. And 65520 will be printed even for X plus 1, even for X of 1 also. But X of 1 is the name of the row, X plus 1 is the address of the row 1. Now what is this? Star of X1 means what? X of 1. Star means 0. X of 1, 0. Guys, it is value now, not an address. X of 1 of 0. It means it's going to print this one, 4. 4 it is going to print. And what about this? X of 1 plus 2. Star means X of 1, 2. 0, 1, 2. That is 6. And it is going to print 6. So which one is going to match, guys? 5514? No, not this. Which one is going to print? You have option 4, 6. Yeah. Option A. 1420. Yes. Good. Everybody? Yeah, option A is correct. Any mistakes, please let me know quickly, because we are going hurry because of 2C 100 questions. But in that process, don't do the mistake. Program should never be executed very quickly, because we are not computers. We can't compute in fraction of seconds. Yeah. Go as per your frequency. And P is a pointer. P is a character pointer. And A is the character array. But you are storing a string underscore, guys, including null character. And P is equal to A. That means if you assume this is 100, 101, you store 100 here. And size of A, अरे इसके लिए तो ये पूरा करना भी जरूरत नहीं था. Size of A is an array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elements we have stored, even though we are giving 9 characters. So that is extra character is null. Everybody? Yeah. Come on. Thank you, Nishu. 9 characters means the 10th one is going to be null character. So size is 10 elements. The size of A is going to be, it's actually, there is one problem, 10 integer, it's not 10 bytes, but it's something is missing. And here assumption is missing. The size of character, is it required to assume? It is required to assume. It is not required, because every system size of character is 1 byte. So 10 elements, 10 characters are there. 10 characters into 1, which is equal to 10 bytes only. No need to assume, because of every system following 1 byte only. So this is 10. But if it is integer array, then definitely you should assume either 2 or 4 that will be given to you. And size of P, that is P is just storing the address. The address size is fixed. And this should be given. It is not given here, but it should be given. Either it may be 2 bytes or 4 bytes as per the given data. Then 10 is the right answer. And if you choose appropriately 10 2 bytes and 10 bytes 11 bytes address अभी तक तो डिजाइन ही नहीं किया सिस्टम में, तो most appropriate, most suitable answer is 10 2. Sometimes 10 4 is also right. Depends on if this is address size. So it is not given. So as per the given option, I am choosing the most suitable one. But sometimes 10 comma 4 is also right. So size of P, that P
depends on the address size in the system. Yeah. So as per the options I'm going here, but there is another option 10 comma 4 is there. Don't confuse. They must be given what is the address of the size. Okay. Now let's move. X is a pointer, not an array. It's a pointer. So let's say 100 stores, Y stores 200. But what is 100? What is 100? That arrow is stored. The first character address is 100. And other one is the computers. So this kind of assumptions are required before executing the program, because you might be dealing with addresses. If you lose any address, then you will confuse which character it is. Okay, I'm executing this and I'm calling f of xy. Xy means it is just 100 comma 200. And 100 means here s. S is going to point. It's just like you are going to store 100 here. So it points. And t is going to store what? 200. It means it's pointing to here. Now string length of s. Guys, string length of 100. From 100, what is the string length? 1, 2, 3, 4, 5. Length is 5, but size is 6. So 5. T length is, because you are passing an address. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9. 5 minus 9. Is it 0 or non-zero? 5 minus 9, guys. 0 or non-zero? It's a non-zero. Minus 4. Minus 4 is a non-zero. So it is a true. True means it is going to execute string length of s. What is the string length of s? Just now I told it's a 5. 5. So C is going to be answer. It prints 5 and it returns. There is nothing to do other than this one. Yes. Everybody? Come on, come on. C is the right answer. Non-zero. Minus 4 is non-zero. Don't print 9. Bandhan. Yes, non-zero. Non-zero. Minus 4 is non-zero means true. True means the if block is executed rather than else. Alright. Fine. Find the output of the following C program. Find the output of the following C program. Now, it is a simple program. Gate means we are going to store array str1 a gate. G-A-T-E and null character. And str2 again gate. Again gate. But you know, these are the two different arrays. Definitely they have different addresses. Everybody remember. And you are comparing str1 str2. It means it just like 100 is equal to 200. Will it match or not? Both are different, right? These are the addresses. The values are going to be different. So it directly goes to false statement, unequal, unequal. Yeah, 8B, exactly, Sweta. Navanit, correct. B is the right answer. Everybody, and this is most important for exam. Are you comparing the addresses of characters? Are you comparing addresses of characters of the constant or characters of the array? Both are different. We will see next. We will see next. Ninth one. Okay, that question is missing. In case if that question comes, how do you answer it? If anybody answering, guys, char star p is equal to gate. In case if in future out of 100 if this question comes, and if anybody comparing if p is equal to q, is it true or false? P is equal to q, is it true or false? Ab true hoga, q, p is going to hold, q is going to hold same constant like 300 300. At 300 that constant will be stored because this is the string constant. This is the string constant. The compiler calculates all the constants. If these two constants are same, they will be kept at same memory and its address will be used. Yeah. Everyone, so this is what a p is equal to q. P is equal to q because p में q में same address होंगे. Q gate is a constant, but ये arrays में नहीं होंगे. Q दोनों अलग अलग arrays है, तो दोनों का the first element address match नहीं होता. Q दोनों अलग अलग memory है. But PQ, even though they are created at different addresses,
but they hold same address. They hold same address. Okay, this is the most important part for C programming pointers. All right. Next one. A is 5. Guys, look at how quickly you need to change your, and I will tell you one thing. If you are able to change the logic from one question to other question very quickly, that is in the gate, the context switch for 65 questions, one question to other question will become so easy. Why guys? यहाँ पर भी ABC भी होंगे, यहाँ पर भी ABCD होंगे, so you are able to understand one program to other program in short time. In short time, you are able to change the values. That means you are in the right direction. The context switch is very quick, very fast for you. And these 100 questions are going to test your mind. Are you able to interpret this question properly or not? Okay. B is garbage, C is garbage, and B is equal address of A. Means let's say 1000 and 1000 I kept here. Indirectly you are pointing this one. And now here the program is very simple. Problem is you might be confusing with pointers. Which is a pointer, which is the multiplication. So guys, you look at it, multiplication has less precedence. So the pointer will be considered first. How? A star B. Okay, space is not there. I'm talking about this is a pointer and multiplication star A plus star B. And look at how you calculate. This is going to be first, and then multiplication is the next. That follows left to right. This is next, and this is last. So calculate according to this. Star B. What is star B, guys? That is a 5. A is also 5, and star A plus star B is also 5, and 5 into 5. 25 into 5, 125 plus 5, that is 130. Yeah. वेरिएबल सी लेने का मतलब नहीं, लेकिन आपको इतना देखना नहीं. यू आर नॉट द कंपाइलर. सी लेना नहीं है, फिर सोचना भी नहीं है उसके लिए. अगर होगा तो सोचेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे. किसी को नहीं बोलना है यार यहाँ पर सी नहीं चाहिए, है ना. इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है यार एग्जाम में. तो आपको जो दिया वो कर लेना. सी नहीं चाहिए, नहीं तो चाहिए, कंफ्यूज के लिए दिया होगा, राइट. यस, डोंट वरी इफ सी इज नॉट देयर, डोंट से इट्स एरर. सी इज यूजलेस, द कंपाइलर विल टेक केयर ऑफ दैट. Okay, just follow what is given to you. 130 is an answer. Okay, now we have again two dimensional array guys. Two dimensional array. यहाँ पर confusion ये होता, ये p plus plus क्या है, star p plus plus क्या है, plus plus star p क्या है. It's already the one of the gate model question. एक बार नहीं आया, minimum 5 times this was the question. This kind of question was there in the exam, right? एक array representation से दिक्कत है, दूसरा पॉइंटर को हैंडल करना दिक्कत है. ये दो दिक्कत को आप हटा दिया तो दिस क्वेश्चन विल बिकम इजी. ओके, चलो चलते. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में साइजेस को तो जरूरत ही नहीं है, फिर भी ऐसे दिया कंफ्यूज के लिए. एड्रेस भी जरूरत नहीं है, वो सारे कंफ्यूजन के लिए दिया. तो दिस इफ दिस इज गोइंग टू प्रिंट एड्रेस आपको जरूरत है. इफ दिस इज गोइंग टू प्रिंट वैल्यू आपको जरूरत नहीं है. तो दिस क्वेश्चन, इज इट प्रिंटिंग एड्रेस और वैल्यू? दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Let's look at it. What is it? Okay guys, आपको पता है 100 क्वेश्चंस एक प्लेस में सॉल्व करना इजी नहीं है. Those people who are able to quickly interpret this 100 questions and mostly you are ready for the C programming test. Yeah. Now P is going to hold address of the first element that is given to you 2000, and each is 4 bytes. So 2004, 2008, 2012, and this is going to be 2016, 20, 24 and 28, 32, 36, 40, 44 and 48 and 52, 56 and then 60. 2060 last element address. So then look at it, how many? 4, 16 into 6, 64. Yes, exactly correct.
नाउ लेट्स हैंडल दैट 2000, ये दोनों एग्जीक्यूट कर लिया मैं, मतलब कंपाइल कर लिया, एंड नाउ स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग p प्लस प्लस, मतलब आपको पता है दिस इज सेम एज p इज इक्वल p प्लस 1। अब क्या होगा, 2000 की जगह में 2004 स्टोर होगा। क्यों, ये 2000 प्लस 1 नथिंग बट 2004। आपको पता है 1 इंटू साइज ऑफ इंट, right? P is pointing to the second element of the first row. Now star p plus plus, star p plus plus, इसको कैसे एग्जीक्यूट करें? इसका मीनिंग ऐसे होता, p प्लस प्लस ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट अभी नहीं होंगे ना, स्टार p पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, p इज इक्वल p प्लस 1 बाद में करना पड़ेगा, p इज इक्वल p प्लस 1, मतलब स्टार p से कुछ मतलब नहीं, यू कैन डिलीट दिस, उससे इफेक्ट नहीं होता कुछ दुनिया में, एंड p इज इक्वल p प्लस 1 अगेन। तो 2004 को हम 2008 करना है। नेक्स्ट प्लस प्लस स्टार पी, ये तो कुछ अलग है, इसको एवेल्युएट करना ऐसे, स्टार पी इज इक्वल स्टार पी प्लस 1। तो मतलब अभी 2008 में पॉइंट कर रहा है पॉइंटर दैट 3 विल बिकम 4। इसको क्या करना है, स्टार पी प्लस 1 प्रिंट करना है गाइस। तो अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्रिंट कर लो। P तो 2008 है, 2008 मतलब स्टार 2008 प्लस 1, मतलब 2008 की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 प्लस 1 क्या है, 5 है, तो 5 वी नीड टू प्रिंट। या कुछ लोग ऐसे हैं P प्लस 1 भूल जाता, प्लस 1 भूल जाता, उसको याद दिलाना जरूरत है। प्लस 1, वो 4 तो ऑलरेडी हो गया, आप प्लस 1 प्रिंट करना है इनको, 5। या डी इज द राइट आंसर। श्वेता, निशु राइट, नितेश राइट, एंड कुछ लोग ऐसे सी कर रहा है। एवरीबॉडी please don't do that mistake guys, come on, don't go anywhere, please keep liking the session and please keep liking the session, this kind of mistakes we can't accept। D is the right answer because plus 1 आप भूल जा रहे हैं, दोबारा plus 1 करना प्रिंटिंग पर। ओके, नेक्स्ट फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसको देखना नहीं, आई ऑलवेज टेल डोंट लुक एट द प्रोग्राम, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट, यहीं से स्टार्ट करना। तो p इज ए पॉइंटर एज अ गार्बेज वैल्यू, x इज 10 एंड p इज इक्वल एड्रेस ऑफ x। तो मतलब p if x is address, x is having address 2000, then 2000 is going to be stored in p and star p। इसको समझना मुश्किल है तो उसको ट्राई कर लेते। स्टार p इज इक्वल x प्लस प्लस एंड प्लस स्टार p। तो इतना प्लस है तो थोड़ा कंफ्यूजन तो हो जाता, देखना पड़ेगा इसको कैसे हैंडल करना है हमको। कुछ लोग ऐसे गलत हैंडल करता, इसका मीनिंग है स्टार पी इज इक्वल एक्स प्लस स्टार पी, इसको ऐसे एनालाइज करना। ये जो एक्स प्लस, ये तो स्टार पी तो समझ लिया, एक्स प्लस प्लस मतलब अभी इंक्रीमेंट नहीं करना है, बाद में करना पड़ेगा आपको। दिस इज द मीनिंग गाइस। कुछ लोग ऐसे जल्दी एक्स इंक्रीमेंट कर लेते हैं, क्यों, पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, हाईएस्ट प्रेसिडेंस है ना, तो लोग सोच लेते हैं ऐसे, है ना। तो x अभी 10 है, तो स्टार पी में क्या स्टोर होगा, 10 प्लस 10 तो 20 स्टोर होंगे, एंड स्टार पी वहीं पर स्टोर हो गया। देन x इज इक्वल x प्लस 1 मतलब 20 को 21 करेंगे, तो यहां पर 21 आएगा आउटपुट। यस, गुड गुड बंधन, यू शुड राइट, बी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। नंबर को नहीं देखना है, 100 क्वेश्चंस को नहीं देखना है, करते रहो। नाउ p x as the 10, p is having garbage and q is having some address, let's say 100, but 100 पर आपको एक abc string है, you have the string abc at 100 onwards the string starts and p is equal address of x, मतलब x मान लेना 1000, then 1000 will be stored and इसको हैंडल कर लेते हैं अभी। स्टार p is equal to star q plus 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 x। Now how this is going to be assumed? Assume that 3 places in between no space, assume that no space, assume that if the space is there it is very easy to identify। Now in 3 places में pre increment लेना है, post increment लेना है। Guys, the compiler always scans in this direction, so पहले ये q प्लस प्लस इसको रहेगा एंड प्लस इज एडिशन एंड x इज अलग, एंड इसको ये ट्रीट करना
स्टार क्यू प्लस प्लस एंड प्लस एक्स, ऐसे ट्रीट करना। बट लेकिन इसको कैसे हैंडल करें? अभी स्टार एंड प्लस प्लस दोनों है क्यू के साथ, इसको कैसे हैंडल करें? इसको पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट तो अभी नहीं करना है, बाद में करना है। तो स्टार क्यू लेना पड़ेगा आपको, स्टार क्यू लेना पड़ेगा। लुक एट हाउ आई राइट दी एक्सप्रेशन, स्टार क्यू लेना पड़ेगा। तो क्यू प्लस प्लस एक बाद में होगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वन। गाइस दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीमेंट बाद में करेंगे। तो स्टार क्यू में क्या है? स्टार क्यू में क्या है गाइस? स्मॉल ए है। तो स्मॉल ए इक्वलेंट एस की वैल्यू क्या है? इक्वलेंट एस की वैल्यू 97 प्लस एक्स का वैल्यू 10, 97 प्लस 10 इट इज 107, 107। सो 107 इक्वलेंट एस की कैरेक्टर, दैट इक्वलेंट कैरेक्टर क्या होगा? तो आपको करना पड़ेगा 97 अगर ए है तो बी सी डी 98, 99, 100, 101, 102, आपको 107 तक जाना पड़ेगा। E F G H I J K, या K इज इक्वलेंट। सो X के अंदर अभी स्टार, अभी तो अंदर में एक्सप्रेशन है ना, तो यू कैन अज्यूम दैट ये 10 और ये इंटीजर है, ये 107 स्टोर होगा, K स्टोर होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। If X is the character type, X is the character type, you can assume K. If it is X is integer type, the value is integer. तो यहाँ पर मैं क्या स्टोर करूँ? K को स्टोर करूँ, 107 को स्टोर करूँ। 107 को स्टोर करना पड़ेगा, क्यों? यू आर हैंडलिंग विथ इंटीजर। सो 10 में 107 जाएगा। K जाना चाहिए था, बट लेकिन इट्स नॉट अ कैरेक्टर टाइप। इज इट क्लियर? 107 एंड Q इज इक्वल Q प्लस 1, तो ये 100 में 101 आएगा, सो इट विल पॉइंट टू बी। तो अब क्या करना है? X को प्रिंट करना है ना। X को किस फॉर्मेट में? इंटीजर में। अगर कैरेक्टर फॉर्मेट में प्रिंट किया, वो K प्रिंट होगा, K प्रिंट होगा यूजिंग टाइप कास्टिंग। यू नीड टू डू द टाइप कास्टिंग। अभी तो जरूरत नहीं है, क्यों इंटीजर ही प्रिंट कर रहे हैं हम। तो 107, यस एग्जैक्टली। इज इट क्लियर? 107। तो देख लेना, आर यू डीलिंग विद परसेंटाइल डी और परसेंटाइल सी? अगर परसेंटाइल सी चाहिए तो यू नीड टू डू टाइप कास्टिंग। कैसे करना है? कैर ऑफ एक्स, क्यों ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? बिकॉज दैट एक्स इज इंटीजर, तो इंटीजर को कैरेक्टर जैसे प्रिंट करना है, पहले टाइप कास्ट करके आपका परसेंटाइल सी यूज करना पड़ेगा। एवरीवन गाइस, या सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये प्रिंट करेगा आपको द के वैल्यू। ऑलराइट, गुड। देखिए ना, थोड़ा अंतर था। कभी कभी ऐसे अब इतना नजर नहीं रखता, पर्सनल डी है पर्सनल सी है, तो नजर रखना पड़ेगा कभी कभी। ऑलराइट, आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो स्टार्ट करो, देखना नहीं कहां से स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग वेरिएबल तो नहीं है, राइट, एंड ग्लोबल वेरिएबल है, तो उसको नजर रखना है पहले। दिस इज द ग्लोबल, तो सबसे ऊपर एक्स को रखना ही पड़ेगा, इनिशियली 0। तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लो। तो स्टार्ट करना एग्जीक्यूशन। एक्स तो 5 है, तो 5 असेंड कर लो, एंड p इज इक्वल एड्रेस ऑफ x, तो यू नीड टू कॉल दिस वन। देख लेना, एड्रेस ऑफ x लिया, मतलब एड्रेस ऑफ x मान लेना 1000, तो ये y लोकल है, ये पॉइंटर है 1000। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेना गाइस। x इज इक्वल स्टार बाय प्लस 2, स्टार बाय प्लस 2, x कहां से आया? यही पे है, वो x नहीं है, लोकल x है। एंड स्टार बाय प्लस 2, दैट इज 5 प्लस 2, 7 स्टोर हो गया, 7। एंड q ऑफ x यहां पर जाएगा, यहां तो z लोकल है, तो x का वैल्यू 7 वी आर पासिंग, तो 7 विल कम टू z, एंड z इज इक्वल z प्लस x। लेकिन किस x है? यहां वाला कहां है वो x? ग्लोबल की x है, रिमेंबर दैट। दो p का x नहीं देखना है आपको, ग्लोबल की x है, तो z इज इक्वल z प्लस x। z की 7 है, द ग्लोबल x तो 5 है, 7 प्लस 5 12, तो वो कहां स्टोर करेंगे? z के अंदर। एंड वी आर गोइंग टू प्रिंट फर्स्ट टाइम, दैट इज z, इट इज 12। सो फर्स्ट तो 12 आ गया, तो रिमेनिंग हटा दो, आइदर नन और ऑप्शन ए इज राइट। तो अगर कोई ऐसे ऑप्शन डी भी कुछ नन की जगह में कुछ और है, तो ये ब्लाइंडली यू कैन चूज।
राइट, ऑलराइट। नेक्स्ट, फिर वापस आएंगे ना प्रिंट करके, यहां आएंगे स्टार वाई इज इक्वल एक्स माइनस वन। एक्स क्या है, लोकल है, दैट इज 7 माइनस 1 विच इज 6। कहां स्टोर करेंगे, स्टार वाई, मतलब स्टार में मतलब स्टार 1000, मतलब 5 पर 6। यस, 6 अपडेट हो गया। ये एक्स प्रिंट कर रहा है तो लोकल की एक्स है, ग्लोबल की नहीं है। स्टार वाई वो इट इज एक्सेसिंग ग्लोबल एक्स, बट एक्स तो लोकल है, तो 7 प्रिंट होगा, क्यों से लोकल एक्स इज 7, तो 7 प्रिंट किया। और इसके बाद फिर वापस आना पड़ेगा आपको, देन यहां पर x तो 6 है, तो 6 करेक्ट, and get carriage just to wait for the character so that you can see the whole output on the screen, right? So the option A is the correct. Which one did I do any mistake in the before one? Which one you're talking about? Okay. Oh, Ram Sai, global variables by default 0. Oh, they are going to store in the data region. Come on, come on. Please don't do the mistake. Don't do the mistake. Global variables by default 0. A x is globally accessing. This x is going to store in globally. Yeah. Any mistakes you have done? Come on, quick. Bhaskar, global is 0, but who will do this assignment? X is equal 5 is going to assign global data only. Come on, yaar. Yeah. Come on, come on. Everybody clear this point? Anyone has a doubt here? Let me know. I'll come back. Please have a clarity. This x is equal 5. I'm pointing it. This x is equal 5 will access global. And पहले 0 था, अभी 5 कर लिया. This is global data. Global variable by default 0. Yes. All right. Come on. Don't do that mistakes. यहां पर कुछ इंटेक्स नहीं है. इंटेक्स होगा तो ग्लोबल एक्स 0 होगा, लोकल एक्स 5 होगा, दोनों अलग होगा, है ना? तो छोटी छोटी मिस्टेक्स को देखना पड़ेगा हम, राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट 14 और ग्लोबल कुछ है तो नहीं है, ग्लोबल डेटा तो कुछ नहीं है ना, तो वही तो है, पहले देखना। गाइस रिमेंबर माय इंट्यूशन बिफोर executing the program, look at global variables and static variables. यहाँ static variables नहीं है, global variables नहीं है, we are in safe zone. Okay, start executing from here. ये तो C तो local की है and B भी local है, A भी local है, लेकिन चेक करना क्या क्या एग्जीक्यूट करने वाला है हम। C अभी तो गार्बेज है सब कुछ, अब एग्जीक्यूट होगा C, ये पहले सारे गार्बेज है। And when you start C is equal 4 अंदर जाएगा, B is equal address of C, जिसमें address of C जाएगा, तो मान लेना ये 1000 होगा, तो जरूरत नहीं 1000 छोड़ो, address of C लिखो सीधा। बट डील करना है, थोड़ा बड़ी डील कर लेना गाइस, एड्रेसेस भी डील कर लेना चलेगा। मान लो 1000, मान लो ये 2000 एंड ए मान लो 3000। ओके, सी के अंदर 4 गया अभी, जस्ट नाउ इट वेंट 4, सो आई एम कीपिंग दैट 4 एज इट इज। एंड बी के अंदर एड्रेस ऑफ सी दैट इज 1000 and A is equal address of B that is 2000. Okay, f of C BA, what does that mean? CBA means C means what C has 4, B means what B has 1000, what A means what A has that is 2000. Everyone, that is the meaning of function call. तो ये यहाँ पर C आएगा, यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर A आएगा, तो just understand x के अंदर जो 4 आएगा, py के अंदर 1000 आएगा एंड ppz के अंदर वो 2000 आएगा, मतलब इनडायरेक्टली ppz। तो ऐसा है ना, b तो इसको पॉइंट कर रहा है और a तो इसको पॉइंट कर रहा है। अभी py इट्स 1000,
indirectly it is pointing to B, and 2000 it is pointing to this one. So I have a link. Okay, let's start executing this one also. Y तो local है और Z भी local है, and even X P Y P P Z also local. And पहली बार स्टार P P Z plus equal to 1, मतलब स्टार P P Z plus equal to 1. कैसे एग्जीक्यूट करना है? स्टार P P Z is equal to स्टार P P Z plus 1. तो देखना गाइस, एक कौन हो सकता? P P Z तो 2000 है, स्टार 2000, मतलब एक स्टार ये होगा या नहीं, कुछ लिख लेते हैं। ये एक स्टार है, एक दूसरा स्टार है। सो स्टार 2000 मतलब 1000, स्टार 1000 मतलब 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो ये करता जस्ट इनडायरेक्टली C इज इक्वल टू C प्लस 1, इनडायरेक्टली वो तो नहीं करता, इनडायरेक्टली वही तो है, डायरेक्टली नहीं करेगा वो। नेक्स्ट दिस वन, Z इज इक्वल टू स्टार P P Z। अभी स्टार P P Z क्या है गाइस? 5 है, तो 5 इसमें आएगा, 5 इसमें आएगा। ये वाले क्या है? स्टार P Y इज इक्वल टू स्टार P Y प्लस 2। स्टार P Y क्या है गाइस? P Y तो 1000 है, स्टार 1000 मतलब वही तो है C वैल्यू, 5 प्लस 2 7, उसी में जाएगा वो भी स्टार P Y के अंदर। क्यों? स्टार P Y में स्टोर करना है ना, वो C में स्टोर होगा। एंड ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया। और y इज इक्वल स्टार P Y, स्टार P Y के अंदर 7 है तो 7 स्टोर करेंगे। नाउ नेक्स्ट x इज इक्वल x प्लस 3, x में क्या है गाइस? 4 प्लस 3 7 होंगे। और x प्लस y प्लस z, x 7 y 7 z 5, 7 प्लस 7 14 प्लस 5 19, सो 19 रिटर्न होगा यहां पर, तो 19 प्रिंट होगा। यस, ऑप्शन बी अंकुर, not a D, B it is. Look at X, Y, Z locally. Come on, good. Thank you so much, guys. Keep liking this session, and I don't need to say that you know what we are doing here, right? We are not solving easy questions of C programming. We are solving most important and sometimes difficult questions that we are able to see very easily because of the memory representations. Yeah. Right, now do you have any global variables? Look at we have that means keep them 0, J is 1. अब start कर लो execution main से, and addresses भी ले लेते 1000 2000, and this means f of 1000 comma 2000 indirectly तो कॉल कर लेते इसको। and p के अंदर p लोकल है तो 1000 आएगा because you are passing the address of I first। Q के अंदर 2000, indirectly P points to I, Q points to J indirectly। now P is equal to Q, मतलब P के अंदर Q आएगा, स्टार P is equal to स्टार Q नहीं, P is equal to Q, मतलब P के अंदर 2000 आएगा, Q की वैल्यू P में जाएगा, है ना? रिमेंबर दैट P is equal to Q is different, स्टार P is equal to स्टार Q different। A star P is equal to star Q updates I and P is equal to Q updates only P. Both are different. Everyone? Yeah. Star P is equal to क्या 2000 कहाँ है guys? 2000 मतलब J है, star 2000 मतलब J is equal to मतलब A1 होगा update 2 करेगा, then return हो जाए, then I value 0 print होगा, J value 2 print होगा, तो 0 2 is right answer। Yeah. Thank you, Mayuri. And guys, I am here always, not only on YouTube, I am here for you that I have experienced most of the difficult parts in my life, that whether in terms of financially, in terms of guidance, and that is what I am trying to service to the society, that to the students what I am capable of doing it is giving the best guidance what I have in my mind. Guys, that is what I am doing. I no need to say thank you that, but I respect your wish, and thank you so much for coming to this channel, to believing us that we are actually doing good job for everyone. And please support us and keep liking the sessions and keep sharing these channels
and keep sharing these videos with your friends so that we can also reach more students, right? So instead of saying thank you, just I want only one thing from you, that share, बहुत ज्यादा शेयर कर लीजिए ऐसे वाले वीडियोस को, हम जो ज्यादा से ज्यादा हम रीच कर पाए, राइट? थैंक यू सो मच. लेट्स मूव ऑन. ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट लेकिन ये भी समझ नहीं आता कुछ लोग को. क्यों? इतना सारे वेरिएबल से, इतना सारे मेमोरी से. वी नो गाइस देयर आर 4 रीजन्स इन द सिस्टम. यस और नो? एट रन टाइम वी हैव 4 रीजन्स. 4 रीजन्स. वी नो कोड रीजन and we have data region, we have stack region, we have heap region. Guys, ये तो डेटा कहाँ रहेगा? We handle the data only 3 places. Our data is present in this region. But ये तो कोड है. That your program will be stored in the code region, and data region we will handle with 3 regions. Data, stack, heap. Data में क्या रहेगा? Data region में this J stored in data region. तो सब तो डेटा है. K data region. Why? Because they are global variables. Static variables भी वहीं पर रहेगा. अगर कुछ ऐसे लोकल में int x कुछ है, ये x stack में रहेगा, stack region पे. अगर कुछ लोकल स्टैटिक वेरिएबल है, वो डेटा रीजन में रहेगा. बट हीप में कौन रहेगा? whenever you use something like that malloc of some data size, let's say 5 bytes required, ये कहाँ क्रिएट होगा? ये हीप रीजन में. जो डेटा, जो मेमोरी है, जो हीप रीजन की है ना, malloc cloc यूज करता है ना, वो हीप रीजन की बात की है, वहां वेरिएबल्स नहीं रहता. यस एवरीबॉडी. तो नाउ J and K resides right in data segment only. The stack segment, code, data segment, heap segment, they are सिर्फ data segment. Yeah, exactly. Global and static variables are stored, are created on the data region. Yes, let's move on. Now, guys, look at it. Main and num, ये क्या है? ड्यूरिंग कंपाइलेशन रन टाइम नहीं जाना है आपको, एग्जीक्यूट नहीं करना, नहीं होता. ड्यूरिंग कंपाइलेशन ये नम इज नॉट डिफाइंड. क्यों? इसका टाइप नहीं है, क्यों इसका डिक्लेरेशन नहीं है. इज इट क्लियर? तो ये एरर पहले ही जनरेट होगा कंपाइल टाइम में, रन टाइम तक नहीं जाएगा हम. यस एवरीबॉडी, दिस इज अ कंपाइल टाइम एरर बिकॉज नम इज नॉट डिफाइंड आइदर ग्लोबली और लोकली. कम से कम ग्लोबल तो होना चाहिए, लोकल नहीं है तो, राइट? या नम इज नॉट डिफाइंड, डिक्लेरेशन नहीं है नम का. इट्स बेसिकली कॉल्ड एज सिमेंटिक एरर. स्ट्रक्चर तो सही है, एरर सिमेंटिक. या नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी होना चाहिए, बट लेकिन फिर भी, राइट? ये तीनों. और ये स्टेटमेंट in C language it is invalid. In C it is invalid. तो compile time error. ये compile time error होगा guys. तो ये रन टाइम तक नहीं जाएगा. क्यों? A plus B is not going to be any layout. आप लिख लो C is equal A plus B. तो C तो layout है, इसके अंदर वैल्यू जाएगा A plus B 11. अगर A plus B माना तो ये layout तो नहीं होगा ना. A plus B एक्सप्रेशन है. That will not give you L value. That will not give you L value. Yes. Yes. No meaning at all. Such statements are not possible. But mathematically, A plus B is equal to C is the equation. But लेकिन C programming में ये statement नहीं है. C statement नहीं है. All right. Now, ये तो storage classes बहुत important है. Storage classes. या तो ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है. मैं सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर नहीं बोलूंगा मैं. इज दैट क्लियर? वो आपको देखना पड़ेगा. सिंटैक्स पक्का तो सिमेंटिक एरर है, सिंटैक्स एरर है नहीं है, वो कंपाइलर का रूल्स देख के ही बता सकता हूं मैं. तो एल वैल्यू इज रिक्वायर्ड, दैट इज अ सिमेंटिक एरर. तो सिंटैक्स एरर इसको इग्नोर करेगा बिकॉज वी मे राइट एम्बिग्युअस ग्रामर्स. क्यों ऐसा होता है ना गाइस? कभी कभी
इस एक्सप्रेशन सही मानते हैं हम? यस सर नो? ये तो सही है ना? तो ये देखो इतना बड़ी एक्सप्रेशन है, कंपाइलर तो मानना पड़ेगा ये सिंटैक्स सही है। तो ये प्लस बी ऐसे ही होगा, तो कुछ ऐसे एड्रेस को डील कर रहा होगा, हमको क्या पता है ना। ये कब वैलिड है गाइस? ए प्लस बी इज इक्वल सी वैलिड हो सकता सिंटैक्टिकली, बट सिमेंटिकली नहीं है। सिंटैक्टिकली वैलिड कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं ये भी बताता हूं एक बार। कुछ लोग को पता नहीं है सिमेंटिक एरर है, उन लोग के लिए कैन आई डू a plus b is equal c is a valid syntax? I am saying it is valid, I have to prove it. कब valid होगा guys? In case a is a pointer and b has some constant है ना, और c कुछ भी है, तो मान लेना a के अंदर कुछ एड्रेस है, it's pointing to somebody, ये कर सकते हैं address plus somebody, you are doing something here, addresses. Let's say 1000 is address plus 2 is 1000 plus 2, let's say 1004. यहां पर कुछ स्टोर करना चाहते हैं आप, कर सकते हैं ना गाइस। सो सिंटैक्टिकली वैलिड, सिंटैक्स नो सिंटैक्स एरर। प्रॉब्लम हो सकता अगर ये सही एड्रेस नहीं है तो सिमेंटिक एरर बन सकता, दैट जस्ट लाइक बिफोर एवरीबॉडी। दैट इज द रीजन this is no syntax error, this is not a syntax error, as per my experience it is just semantic error। क्यों इस स्टेटमेंट वैलिड होगा कभी कभी if you declare abc properly, is it clear? ये semantic error ही होगा। okay, let's move on। जिसको समझ नहीं आ रहा है प्लीज come to the Unacademy classes, please come to the Unacademy classes, then we are going to help you all the time। and I is local garbage, x is 0। अब I 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 स्टोर करेंगे, and I is equal 0, I less than 4, 0 less than 4 तो सही है ना। तो we will enter that a तो लोकल है, 2 स्टोर करेंगे, and x is equal x plus a, 0 plus 2 is going to be stored in x। ये भी हो गया, a plus plus 3 हो गया। तो जब वापस यहां जा रहा है तो ये डिलीट होगा, ये नहीं रहेगा क्यों a is local to for block। तो when you are executing I plus plus, when we are when we are executing I plus plus, ये memory destroyed already, a memory destroyed क्यों? वो ऑटोमेटिक वेरिएबल है गाइस, जस्ट बिफोर I plus plus द a का मेमोरी डिस्ट्रॉयड है। इज दैट क्लियर? एंड I plus plus किया तो 1 एंड 1 लेस देन 4 सही है, ये दोबारा क्रिएट होंगे, एंड x प्लस ये 2 प्लस 2 4 x में स्टोर करेंगे, एंड 2 3 इंक्रीमेंट करेंगे। जब I plus plus में जाए तो ये दोबारा डिलीट होंगे, एंड नेक्स्ट I plus plus 2 देन 2 लेस देन 4 अगेन इनसाइड, अगेन दोबारा ये क्रिएट होगा, एंड x plus a दैट इज 4 प्लस 2 6 एंड दोबारा इंक्रीमेंट होगा और दोबारा डिलीट होगा, और I का वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होगा, 3 लेस देन 4 सही है, एंड ये दोबारा क्रिएट होगा, एंड नाउ 6 प्लस 2 8 एंड 3 बनेगा और डिलीट करेगा, एंड नाउ I का वैल्यू पहली बार 4 होगा, 4 लेस देन 4 फॉल्स, इट कम्स हियर, x का वैल्यू 8 होगा, सही है। ऑप्शन बी सही है। Yes, Mayuri, we can if you can access that address and you can update, Mayuri, you can do that, correct? That's what I have given. It is syntactically valid because in other programs that a plus b is equal c is a valid syntax. इस प्रोग्राम में नहीं होगा because of you are looking at the meanings, पर दूसरी प्रोग्राम में वैलिड बना सकते हो उसको। फाइन, चलो आगे। ये स्टैटिक है, and I always tell one thing, please, one thing you have to look at, consider global and static variables before execution। क्यों? वो ऐसे ही करना है, क्यों? बिफोर एग्जीक्यूशन ओनली उसका मेमोरी क्रिएट होगा, इज इट क्लियर? ये रन टाइम में नहीं दिखता, इससे पहले ये क्रिएट होगा तो बनेगा, ये बाद में किसी को जरूरत नहीं है। बट ये मेन फंक्शन को कैसे पता? ये कहां पर है?
ये ऑलरेडी लिंक बना हुआ एक्टिवेशन रिकॉर्ड का एक लिंक होता, एक्सेस लिंक। ये एक्सेस लिंक को पता है ये कहां पर है, ये डेटा रीजन में ऑलरेडी क्रिएटेड है एवरीबॉडी। बट जो IX है वो लोकली क्रिएट होता, एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर ही क्रिएट होता, क्यों? दे आर ऑटो वेरिएबल्स। इज इट क्लियर गाइस? वन रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज don't look at global static variables like every local variable. They are going to act different. Is it clear? जो देखो static int मैं तो डिलीट कर दिया, क्यों? वो देखना नहीं कभी, बिफोर एग्जीक्यूशन ही देख लो उसको, काम खत्म। Is it clear everybody? Yeah. Now start executing. Now start executing. Now start executing. ये भी नहीं होता क्यों? इसका मेमोरी ऑलरेडी बना दिया, वो लोकल के अंदर दिखता, मतलब एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर दिखता वो। नाउ I इज इक्वल 0, 0 असाइन करेंगे एंड 0 लेस देन 4, सही है, एंट्री करेंगे। अब x इज इक्वल x प्लस ए, अब क्या होगा? 0 पर 2 होंगे और a प्लस प्लस, ए कहां है? डेटा रीजन में, इवन तो इट इज लोकल वेरिएबल डेटा रीजन में। तो कैसे पता ये कहां पर है? ये लिंक से जाएंगे हम, ये लिंक से जाके इस 2 को हम इंक्रीमेंट करेंगे 3। तो अब when you go to I++, जो ये डिलीट होगा क्या? नहीं होगा। पुराना प्रोग्राम में, जो प्रीवियस प्रोग्राम में ऑटो वेरिएबल था, ये बार बार डिलीट किया नहीं किया? ये बार बार डिलीट किया नहीं किया? देखो अब ये बार बार डिलीट नहीं होता, क्यों? अब ये तो ऑटो था बट अब स्टैटिक है, तो मतलब ये एक बार क्रिएट किया ना, प्रोग्राम टर्मिनेशन के बाद ही डिलीट होगा, ये अभी नहीं होगा। तो अब ये वो है, एंड I++ 0 को 1 बनाएंगे, 1 लेस देन 4, सही है, तो एंट्री करेंगे। अब 2 + 3 बनेगा 5। प्रीवियसली क्या हो रहा था? 2 + 2 हो रहा था, है ना, 5। तो a को इंक्रीमेंट करेंगे 4, बोलना नहीं आपको, एंड देन I को इंक्रीमेंट करेंगे एंड देन x प्लस से दोबारा 5 + 4 9 एंड a++ दैट इज 5 और I++ 3। अब 3 लेस देन 4 भी सही है, दोबारा एग्जीक्यूट कर लो, x प्लस ए 9 + 5 14 सही है ना, 14 या देन a++ 6। अब बनेगा I का वैल्यू 4 लेस देन 4, पहली बार फॉल्स है तो बाहर आएंगे, x का वैल्यू प्रिंट करेंगे 14। यस, स्टैटिक एवरी स्टेप में अपडेट होगा, क्यों? मेमोरी एक ही बार बनेगा, उसको बार बार नहीं बनेगा। दैट इज द रीजन, प्लीज कंसिडर ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल्स बिफोर एग्जीक्यूशन। उसका क्रिएशन एक ही बार होता, बार बार नहीं होता, क्यों? ऑटोमेटिक वेरिएबल्स नहीं है, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स नहीं है, तो मेमोरी इज क्रिएटेड बिफोर एग्जीक्यूशन। मेमोरी इज क्रिएटेड ओनली वंस, बार बार नहीं होता उसका। करेक्ट एवरीबॉडी, गुड पॉइंट अभिरूप। Clear this point? Let's move to the next question. एक क्वेश्चन ज्यादा ही आया। Okay, 2021 this is okay. Predict the output of the following program. ये स्टैटिक है, मैं क्या कहा? इसको डिलीट कर लो, डेटा रीजन में डाल दो, 0 बाय डिफॉल्ट। J ये C है, C मतलब A B C 97 98 99 स्टोर होता, मान लेना ये तो C है, 99 मतलब C है, ये भी डिलीट कर दो। इज इट क्लियर? अब स्टार्ट कर दो एग्जीक्यूशन। देखो मैं एग्जीक्यूट स्टार्ट नहीं किया, मैं एनवायरनमेंट बना रहा था, तो स्टार्ट कर लो अभी एग्जीक्यूशन। सीधा पहली स्टेटमेंट प्रिंटफ ही होगा, वो डिक्लेरेशन कंपाइलर के लिए, रन टाइम में नहीं दिखता वो किसी को। ओके, नाउ ये %C ++ J मतलब ये प्री इंक्रीमेंट है ना, तो J का वैल्यू 100 बनेगा ना, एंड ++ A ये 1 बनेगा ना, और ये तो %C प्रिंट करना है, मतलब J तो 100 था, तो हमको क्या प्रिंट करना? उसका कैरेक्टर वैल्यू क्या है? D होगा, तो ये तो D प्रिंट करेगा। ये नेक्स्ट वाले 1 प्रिंट करेगा, तो D, 1 ये सही है, D, 1। अगर ऐसे होता printf %D होता, क्या होता? क्या होगा? अब ये प्रिंट होता 100, D है ना 100, ये प्रिंट होता 1। एवरीबॉडी, दोनों इंटीजर्स चाहिए ना,
ऑलराइट, इज द क्लियर? तो देख लेना, ये 100 को प्रिंट करना, डी को प्रिंट करना, दैट डिपेंड्स ऑन परसेंटाइल सी एंड परसेंटाइल डी। या ऑलराइट, सो इस सिनारियो में द आउटपुट डिफरेंट होता। यहां पर परसेंटाइल सी है, देखना पड़ेगा आपको। ऑलराइट, चलो जे ये लोकल है, तो स्टार्ट कर लो एग्जीक्यूशन। सी और जे प्लस प्लस मतलब सी, मतलब आप मान लेना गाइस ए बी सी 97 98 99, तो सी मतलब अंदर बाइनरी फॉर्म में जो सी का आज की वैल्यू 99 स्टोर होगा। वी विल जस्ट डील विद 0 एंड 1 एंड जे प्लस प्लस वो 99 को 100 बनाएंगे। एंड अब आपको दो अलग अलग है, परसेंटाइल सी मतलब 100 किसकी है, डी की है, तो डी प्रिंट होगा, परसेंटाइल डी मतलब 100 प्रिंट होगा, तो डी कामा 100, एवरीबॉडी डी कामा 100, द परसेंटाइल सी विल प्रिंट कैरेक्टर, दिस विल प्रिंट द डेसिमल इंटीजर वैल्यू, राइट। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये अनसर्टेनिटी इसलिए यूज करते हैं इफ यू वांट अ बिगर रेंजेस। अभी तो रेंजेस की जरूरत नहीं है, जस्ट इट इज अबाउट द फंक्शनलिटी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट एट द एंड ऑफ द कोड, एट द एंड ऑफ द कोड, तो एन का वैल्यू दिया नहीं है ना, तो विल अज्यूम समथिंग, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द काउंट एट द एंड ऑफ द कोड इफ n is equal to, let's say 9, n is equal 9, तो n के अंदर 9 है अभी, क्यों अज्यूम कर लिया ना हम, नहीं है तो आप आसानी कर लो सीधा। अगर कोई कंफ्यूज किया ना, इस प्रोग्राम कंफ्यूज हो रहा है ना, इसको असाइन कर लेना। इज इट क्लियर? आपको वो इफ n equal 9 9 निकला है, सो डायरेक्टली 9 यू विल असाइन टू दैट कोड डायरेक्टली। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। n के अंदर 9 है, ये पक्का लोकल वेरिएबल है, क्यों, ये फंक्शन के अंदर हो गए, is talking about some part of the code within the main function। या count तो 0 है, ये लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, इनको चाहिए what is the value of the count at the end of the code, यहां पर चाहिए इनको what is the count का वैल्यू क्या होगा। तो चेक कर ले, while 9 count प्लस इज इक्वल, मतलब काउंट इक्वल काउंट प्लस n ampersand 1, मतलब क्या है, दैट इज अ बिटवाइज एंड, एवरीबॉडी नोस दिस इज बिटवाइज एंड। तो आपको समझ में आना चाहिए इसको कैसे परफॉर्म करें एवरीबॉडी। तो पहली बार व्हेन n is 9 फर्स्ट इटरेशन, तो ये क्या होगा, काउंट तो 0 है, तो n ampersand 1 मतलब n का वैल्यू 9 है, 9 की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होता, 1001, ये सिंगल 1 क्या होता 1, तो ये 9 है, ये 1 है, तो इसका एंड करना, बिटवाइज एंड है, 1000, तो 1 होता, 0 प्लस 1 ये काउंट में 1 होगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट ऐसे था, नेक्स्ट स्टेटमेंट n दैट राइट शिफ्ट इक्वल टू 1, इसका मीनिंग है n इज इक्वल टू n राइट शिफ्ट बाय 1 बिट, मतलब n तो 9 था, तो उसको राइट शिफ्ट बाय 1 मतलब इसका n/2 है, n/2, 9/2 क्या होगा, 9/2 क्या होगा, सपोज 1001 है, इसको राइट 1 बिट राइट शिफ्ट किया, 0 1, ये 1 यहां आएगा, 0 और ये 0, ये 1 निकल जाता, तो ये 9 था, 9/2 क्या होगा, 9/2 a 4 होगा, 4 है ना, 0100, तो n के अंदर 4 आएगा। तो दिस इज आफ्टर फर्स्ट इटरेशन गाइस, दिस इज आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, तो ये बार बार तो करना पड़ेगा ना, जब तक n वैल्यू 0 होगा। तो n अभी 4 है, n पहले 9 था, अभी 4 है, 4 भी ट्रू है, तो वी विल एंटर सेकंड इटरेशन, तो क्या होगा, काउंट इज इक्वल, सीधा वैल्यू लिख लेते हैं, काउंट का वैल्यू 1 है, n ampersand 1 मतलब 4 ampersand 1, देख लेना 4 कहां पे लिख लेना, 0010001, ये 4 है, 2 है, सॉरी ये होता जल्दी में 0100, ये 4 है, ये 1 है, एंड कर लो, सारे 0 बन जाएगी, सारे 0, मतलब ये 1 प्लस 0 है अगेन, तो 1 प्लस 0, दिस टाइम द काउंट इज 1 only,
सो 1 ही करेंगे हम अपडेट। बट n का वैल्यू n राइट शिफ्ट बाय 1, n का वैल्यू तो 4 था, राइट शिफ्ट बाय 4, 4 by 1 is sorry 4 by 2 is 2, एवरीबॉडी इट्स 2, इट्स 2, सो 2 करेंगे। नेक्स्ट टाइम 2 आया, एंट्री करेंगे दोबारा, ए थर्ड इटरेशन, थर्ड, देन काउंट इज इक्वल टू 1 प्लस, दैट्स अकाउंट ऑलरेडी 1 है ना, तो 1 प्लस लिख रहा हूं सीधा, 1 प्लस काउंट प्लस n तो 2 है, 2 एम्परसेंड 1, 2 एम्परसेंड 1, तो क्या होगा 2 में 0 0 1 0 0 0 1, ए भी 0 बनेगा, है ना, 2 1, ए भी 0 बनेगा, सो दोबारा काउंट इज 1, तो दोबारा काउंट इज 1, बट n का वैल्यू क्या है, n राइट शिफ्ट बाय 1, मतलब 2 राइट शिफ्ट बाय 1, 2 by 2 is a 1 1 1 1, तो ये 1 बनेगा। नेक्स्ट टाइम 1 is also true, अब एंट्री करेंगे 1 and 1, अब फोर्थ इटरेशन गाइस, फोर्थ इटरेशन, तो काउंट का वैल्यू, काउंट इज इक्वल 1 प्लस n का वैल्यू 1 and 1, ये 1 बनेगा, 1 प्लस 1 2 बनेगा, तो 2 2, एंड अब n की वैल्यू दैट 1 1 था, उसका राइट शिफ्ट बाय 1 बिट करो, 0 बन जाएगा, n राइट शिफ्ट बाय 1 1 राइट शिफ्ट बाय 1, ये 0 है, तो n का वैल्यू फर्स्ट टाइम 0, तब 0 है, फॉल्स होगा, डायरेक्टली विल कम आउट। तो व्हाट इज द काउंट वैल्यू गाइस, व्हाट इज द काउंट, वी गॉट समथिंग व्हिच इज 2, which is 2, and what is 2 guys, if you observe the input tha 1001, that is 9, and it has counted number of bits in the binary equivalent of given n value, so number of ones in binary equivalent of n, everybody the count ka value 2 hai, is it clear, count ka value 2 hai, this is going to be binary, the number of ones in binary equivalent of n is stored in the count, is it clear, if I print the count, yes, option A is going to be, it's counting, the count has that number of ones in binary of 9, binary equivalent of number 9, yeah, so ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, क्यों गाइस, वो लोग इनपुट नहीं देता कभी कभी, for larger values of n, for smaller values of n, for any value of n, what is the functionality of the program, तो समझ में आना चाहिए ये क्या करता प्रोग्राम, मैं तो लेके कर रहा हूं, लेकिन ऐसे भी समझ में आ सकता है, n का वैल्यू बिना लेकर ये डिक्लेरेशन भी हटा सकते हैं, यस, या, एंड अब कुछ और है, अब चेक करना पड़ेगा, ये assume again let's say 9, assume 9, तो ये क्या करता, अब तो कुछ कोड में कुछ फर्क दिख रहा है आपको, यहां n and 1 था, अब क्या है गाइस, n and 0 है, तो चेक करना पड़ेगा ये क्या करेगा, अभी चेक कर लेते हैं, n का वैल्यू 9 है एंड काउंट इज 0, अब फर्स्ट इटरेशन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इटरेशन व्हेन n इज इक्वल 9, व्हेन n इज इक्वल 9 क्या होता, काउंट इज इक्वल काउंट प्लस 9 एंड 0, तो हमेशा तो 0 है ना, ये हमेशा तो 0 है, उसको लिखना भी नहीं है, आपको लिखना भी नहीं है, सॉरी लिखना भी नहीं है, सीधा लिख लो, हमेशा 0 ही बनेगा, काउंट प्लस 0 ही है, दिस इज ऑलवेज 0, है ना, तो काउंट प्लस 0 ये क्या है, इस स्टेटमेंट को ही डिलीट कर सकते हैं आप, इस स्टेटमेंट को ही डिलीट कर सकते हैं, डिलीट दिस स्टेटमेंट, a count is equal count meaningless statement in the execution, है ना, तो this statement you can ignore always, तो count नहीं होगा ना, तो count क्या होगा at the end, count तो एक बार भी execute नहीं होगा ना, count equal count, count equal count, count equal count, ये हमेशा क्या बनेगा, तो n का वैल्यू जो भी है ये 9 बनेगा, नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम n is equal 9 by 2, that is n is equal 4, third time n is equal 2, fourth time n is equal 1, fourth time n is equal 1, fifth time n is equal 0, तो फिर भी काउंट तो अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि काउंट इज इक्वल काउंट प्लस 0 यही एग्जीक्यूट होगा, तो ऑलवेज आउटपुट इज 0, एवरीबॉडी, या दैट इज व्हाट, इज इट क्लियर, तो इस स्टेटमेंट को अगर पहले समझ लिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना भी जरूरत नहीं है, कि इज आस्किंग अबाउट ए काउंट, या डेड कोड नहीं है गाइस, क्यों, इसके बाद n वैल्यू प्रिंट किया तो 0 प्रिंट होगा ना, n पहले 9 था अभी 0 था, ये कोड तो सही है,
ये काउंट वाली है वो डेड कोड मान सकते, क्यों? इन फ्यूचर देयर इज नो यूज। डेड कोड मानना मुश्किल है गाइस, वो यू रिक्वायर कंपाइलर नॉलेज टू अंडरस्टैंड। चलो, ये तो बहुत इजी प्रोग्राम था गाइस। नो ग्लोबल, सो मेन आई एम सेफ तो एग्जिट होगा, डायरेक्टली एग्जिट, दिस टर्मिनेट्स प्रोग्राम। Exit you can call. 0 means 0 and 1 to report, that's all. 0 means you have some problem in the code, 1 means okay, it's okay for me, something like that. So I am safe, that is only produced and program terminates. Yeah, exactly. Mahendra, Mayuri, please don't ask dead code now. वो कंपाइलर में पढ़ेंगे हम। what is dead code, इनको बताओ क्या एक बार, what is the dead code? बहुत मुश्किल है डेड कोड डेफिनेशन, आई डोंट थिंक यू विल अंडरस्टैंड, बट इट्स ओके। इसमें बहुत सारे डेड कोड्स हैं। एक तो y तो प्रिंट कर रहा है, तो y इज इक्वल 20 तो सही है, x का यूज ही नहीं हो रहा है, तो x इज इक्वल 10, ये डेड कोड मान सकते हैं आप, क्यों? दैट इज गोइंग टू बी नॉट यूजफुल इन द फ्यूचर, तो x इज इक्वल 10 इज डेड कोड बेसिकली। देयर इज अनदर काइंड ऑफ डेड कोड, अनदर काइंड ऑफ डेड कोड हमेशा प्रिंट गेटिव होता, तो दिस इज आल्सो डेड कोड, इट्स नेवर प्रिंट्स। There are x is equal 10 is dead assignment, x is dead here, x is not live in the future because nobody going to use. There are two dead codes. One dead code is unreachable, other dead code is basically it is useless, it is not used in the future, right? There are two dead codes here, there are two dead codes. This is unreachable, another one reachable, but like in future no use, in future no use of this x value, no use of x. So there are two dead codes here, x is equal 10, another one is this else part, दोनों dead codes है everybody, दोनों dead codes है। ये बहुत difficult definition है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, कंपाइलर में अच्छा से समझ में आएगा या नहीं। ऑलराइट, गुड राम साई, क्लियर? या चलो चलते हैं आगे। इफ a is one dimensional array in C, a of I is evaluated by the compiler or by the system, whatever it is. Internally a of I is not a of I. How this is going to be analyzed? Guys, this is always same as what? Star of a plus I. A तो होंगे हमेशा, हमेशा। When we write a of I, right? ये तो address था, ये is what guys? Most of the people don't know what is a means. Let's say 1000. If this is the first element, a means basically same as address of a of 0 only. A means 1000, star of 1000। अगर आपको लेट्स से इंडेक्स 5 एक्सेस करना है तो स्टार ऑफ 1000 प्लस 5, अगर इसके अंदर इंटीजर्स है, सपोज अस्यूम इट इज 2 बाइट्स, तो क्या होगा? ये 1000 प्लस 5 विल बिकम 1000 प्लस 5 into 2, इट्स 1010। वो डेटा आएगा, अगर यहाँ पर 23 है सो दैट विल रिप्रेजेंट 23 है ना। ये ऑफ 5 भी वही एक्सेस करेगा 23, and star of a plus 5b 23 access करेगा। Yes or no? Yeah, that's going to be C, है ना? Yes. And in 2-dimensional array, an E of ij, guys, ये कैसे execute होगा basically? Remember that. There are two slices here. Slices will follow left to right. मतलब ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए, मतलब a ऑफ i पहले होगा, स्टार ऑफ a प्लस i, इसके बाद j एग्जीक्यूट होगा। इसको दोबारा बने ऐसे x ऑफ j जैसे बने, तो इसका मतलब क्या है? स्टार ऑफ x प्लस j। तो ऐसे बना लो, a स्टार ऑफ a प्लस i x है,
तो प्लस जे बना लो और एक स्टार बना लो. इज इट क्लियर? तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे. दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट. बट दिस इज डेफिनेटली इक्वलेंट टू, डेफिनेटली इक्वलेंट टू, इक्वलेंट टू, मैं बोल रहा हूं इक्वलेंट टू a of I plus j a star. Even though you have not done a of I first, still it will do the same job. This is also equivalent to star of a plus I, उसके बाद of j. तो जो पहले स्टेटमेंट था वो ऑलरेडी लिख लिया तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं है. इज इट क्लियर? दिस आर ऑल इक्वलेंट, बट एग्जीक्यूशन तो ये सही है. Fine. Which one is going to match, guys? A of ij first, ये वाली या D? D. Good. Everybody answered correctly. D is right. D is right. Good. Keep on going. Now, which of the following are correct of the following declaration? And यही तो चाहिए हमको. ये तो declaration था. 2 rows and 3 columns are there. इनको कुछ और चाहिए. A of 0 1. अभी तो कहा A of 0 1. This is nothing but a of 0 पहले मान ले स्टार a plus 0 और plus 1 स्टार. लेकिन a plus 0 को ये लिख सकते ना, ये तो plus 0 है ना, तो स्टार ये plus 1. तो is that same or not? Yes, this is correct. And a of 1 2, is it same as this one? Just look at it. a of 1 2 पहले किसको करना पड़ेगा? 1 को स्टार a plus 1, बाद में 2 को. मतलब ऐसे दिख रहा है क्या? चेक कर लो गाइस. पहले स्टार a plus 2, वो plus 2 लिखा या 1 चाहिए हमको. दिस इज रॉन्ग. इट कैन लीड टू सम अदर. दिस इज इक्वलेंट टू a of 2 of 1. वो a of 1 2 कैसे होगा? a of 1 2 अलग है, रो 1 2 एलिमेंट 2, a of 2 1 रो 2 एलिमेंट 1, दोनों अलग है ना गाइस, है ना? दिस इज डिफरेंट. एंड a of 0 0 सेम एज स्टार स्टार, ये ऑब्वियसली. व्हाई गाइस? a of 0 0 में आपको स्टार a plus 0 आता, प्लस 0 स्टार, दोनों 0 से तो स्टार स्टार a दिखता आपको. yes, 1 and 3 are correct. yeah, good, right? And basically you should know how to access the array. That is the reason these points are already there in the previous gate. Okay. And most important one is how to access the elements of an array. How to access the elements of an array, guys? Yeah. Can I say 1 of a of 2 is same as a of 1 of 2? क्यों? पहले तो यही तो एग्जिट होंगे ना. आप स्टार ऑफ a plus 1 लिखा, स्टार ऑफ 1 plus a लिखा, दोनों तो सेम है ना गाइस. And remember that in general a of 1 is equal to 1 of a only. This is equal to star of a plus 1 is equal to star of 1 plus a. a सही है. तो this is same as a of 1 2. and guys एक 3 दिया, मतलब 3 elements लेना पड़ेगा आपको. तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90. right? This is our 2-dimensional array. And who is a of 1 2 guys? This is a and this 0 1 2. a of 1 0 1 2. a of 1 matlab this is the row and 2 matlab this is a column. 60. yeah, 60 is the right answer. And you know this represent row, this represent column. yes, all right, very easy. Just you should know that 1 of a of 1 is same. And again look at this, how to understand star 1 of a. ये क्या है मीनिंग? लिख सकते क्या? स्टार a of 1 लिख सकते हैं ना. इसको कैसे लिखे? क्यों? पहले तो वही तो एग्जिट होंगे ना गाइस. देन दिस वन, तो पहले तो एग्जिट किया a of 1 1 of a तो सेम है. देन इसको कैसे लिखे हम? सेम एज a of 1 of 0. क्यों? a of 1 of 0 क्या होता गाइस? a of 1 plus 0 स्टार होता.
ये +0 को आप हटा सकते हैं, a of 1 लिख सकते हैं आप. So it is nothing but a of 1 0. बताओ this is a of 0 वाले है, a of 1 है. That is this is the a of 1 0. 40 is the right answer. Yes, option A. है ना? And you should have a clear representation of an array. That was the reason those people who are not able to understand these answers, the reason is you are not good at the concept. Not people assume I don't have much practice in the problems. No, please don't practice much problems. Before that, understand the concepts clearly. तो problems तो आप ही करोगे ना. You can design your own problems if you want it. Yeah. This is kind of another gate question model. Valid declarations, guys. You require these 3 so that I can find out 3 elements in each row. You can do that. अगर ये column miss हो गया तो कर सकते क्या? Number of elements in each row is missing. Number of elements in each row is missing. तो कुछ नहीं कर सकता आप. 2 rows तो बता दिया, लेकिन एक रो में कितना होगा मालूम नहीं है हमको. Is that clear? This is same as A of 3 of 3 declaration. But ये क्या है मालूम नहीं पड़ता. What is this? So this is the invalid declarations in the program. So one only valid. Yeah, option A again. Valid declaration, guys. Yeah. Clear? Yeah, let's move on. One only, exactly. One only valid declaration. Yeah, next. Now, this kind of program is already asked in GATE, and we will see that GATE question also, which is going to come. And देखो guys, I तो local था 10, J भी local था 11, and address of या address of J, मतलब ले लेना address, तो बहुत easy लगता है address लेंगे तो. तो this is nothing but A of 1000, 2000. तो यहाँ A है, उसके अंदर 1000 जाएगा, यहाँ B है, इसके अंदर 2000 जाएगा. indirectly the A points to I and B points to J, और B is equal A, मतलब B के अंदर A का वैल्यू आएगा. अगेन स्टार B is equal स्टार ये अलग है and B is equal A अलग है, दोनों डिफरेंट है. तो हमेशा याद रख लेना दोनों डिफरेंट है. तो ये में जो है वो B में आएगा, मतलब तो B का वैल्यू अपडेट होगा 1000. तो ये लिंक इस तरह बनेगा अभी. इज इट क्लियर? देन स्टार A इज इक्वल स्टार A प्लस 2, स्टार A प्लस इक्वल 2, मतलब स्टार A इज इक्वल स्टार A प्लस 2, मतलब स्टार A मतलब I वैल्यू अपडेट होगा ना, दैट इज 10 प्लस 2 12. तो जब प्रिंट करोगे फिर वापस आओगे, प्रिंट होगा I का वैल्यू 12 प्रिंट होगा, J का वैल्यू 11 ही रहेगा. तो D होगा आंसर. यस, D होगा आंसर, क्यों यहां पर J वही तो है 11. अगर वहां प्रिंट किया स्टार A स्टार B, वहां 12 12 प्रिंट होता. यहां अगर प्रिंट एफ ऐसे कोई लिखा परसेंटाइल D कामा परसेंटाइल D, इसके अंदर लिखा स्टार A कामा स्टार B, यहां का प्रिंट होगा 12 12 प्रिंट होगा. यहां पर ये 12 प्रिंट करता, ये भी 12 प्रिंट करता. लेकिन I didn't print that star A star B in the capital A function. I print ij in the main function. तो ये ij J11 ही रहेगा, I12 रहेगा. एवरीबॉडी, तो कुछ लोग 12 12 बोल रहा है, उसके लिए मैं कह रहा हूं 12 12 कब प्रिंट होगा? इन केस द printf is here. All right, is it clear? 12 12 नहीं बोलना है guys. 33 हमेशा देखना नहीं. रिमेंबर पॉइंटर्स, अरेज, फंक्शंस, रिकर्शन एग्जीक्यूट कर लेना एज इट इज. तो स्टार्ट कर ले एग्जीक्यूशन. x तो 10 है और y के अंदर एड्रेस ऑफ x होगा, मान लो ये 1000 है तो ये पॉइंट होगा ऐसे, एंड ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा प्लस प्लस स्टार y. ये कैसे एग्जीक्यूट करें हम? तो आपको मालूम होना चाहिए ये स्टार y पहले कंसीडर करना है, देन डबल प्लस. इसका मीनिंग है स्टार y इज इक्वल स्टार y प्लस 1. ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट से मतलब नहीं होता अभी. इज इट क्लियर? अगर ऐसे कुछ स्टार y डबल प्लस है, अगर प्लस प्लस स्टार y है, दोनों हमेशा सेम रिजल्ट आएगा, दोनों हमेशा. ओके, दैट इज आल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड माय क्लासेस. स्टार y इज इक्वल स्टार y प्लस 1. तो क्या बनेगा? 10 को 11 बनाएंगे हम.
क्लियर, एग्जिट हो गया। देन स्टार वाई, ये वाली स्टार वाई इज इक्वल स्टार वाई प्लस 2, मतलब 11 को 13 बनाएंगे और स्टार वाई ही प्रिंट कर रहा है ना, तो 13 तो प्रिंट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ लोग कंफ्यूजन होता है ये वाई इंक्रीमेंट हो रहा है स्टार वाई इंक्रीमेंट हो रहा है, बस उस कंफ्यूजन को हटा दो। यस, 34 ये array की गेम है guys। when array comes I have a clear representation, when array comes I have a clear representation। 10 20 30 40 50, okay, just wait। 10 20 30 40 50, for easy purpose I'm just assuming addresses 1000, just assuming 1000 2 4 6 8, तो समझ में आए जल्दी। ये स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी ऑफ ए मतलब एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट गाइस, हमेशा याद रख लेना। कुछ लोग को याद नहीं रहता, ए मतलब एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 ओनली, रिमेंबर दैट इन 1D 2D 3D दिस इज द फंडा, राइट। 1000 वी आर पासिंग 1000, तो यहां पर a अलग है गाइस, दिस इज अनदर वन, इट्स अ पॉइंटर, इट्स नॉट अरे नाउ बट दैट होल्ड्स 1000, इनडायरेक्टली दैट पॉइंट्स टू दिस वन। जब a इज इक्वल a प्लस 3 किया 1000 में 1000 प्लस 3 है ना, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 1006 जाएगी, है ना। कुछ तो नहीं हुआ ना, यू डिडंट अपडेट दैट स्टार a इज इक्वल समथिंग, तभी अपडेट होगा ना कुछ, है ना। a इज इक्वल a प्लस 3 थे, कुछ अपडेट ही नहीं होता गाइस। स्टार a इज इक्वल स्टार a प्लस 3, कुछ अपडेट होने के लिए चांस है ना। तो व्हेन यू रिटर्न बैक a ऑफ 3 प्रिंट किया, कुछ अपडेट हुआ। ये तो a ऑफ 0 है, a ऑफ 1 है, a ऑफ 2 है, a ऑफ 3 वो तो 40 है, वो अपडेट नहीं हुआ, 40 तो है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब प्रोग्राम तो बड़ी दिख रहा है पर कुछ तो नहीं हुआ। कभी कभी ऐसे होता गाइस, कभी कभी ऐसे होता, पूरा घुमा के वहीं पे आना पड़ता हमको, है ना। तो बी केयरफुल अबाउट द प्रोग्राम्स, दिस इज द काइंड ऑफ ट्रिक फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स। ओके, अब देखो, अब तो कुछ तो हो रहा है, अब तो कुछ तो हो रहा है, तो इसको हैंडल करना सही है। तो इतना लिखना भी जरूरत नहीं पड़ता, कभी कभी समझ लिया आपको। जस्ट आई एम राइटिंग एवरीथिंग जस्ट टू अंडरस्टैंड क्लियरली। Assume this is a 1000, a second element, third element, fourth, sorry, 6 and 1008, 2 bytes लिया मैं। ये इसका मीनिंग है ABC of 1000। ये के अंदर 1000 तो गया, अब एग्जीक्यूशन कुछ और चल रहा है। स्टार A इज इक्वल स्टार A प्लस 3, पक्का अपडेट होगा। तो ये वाले हैं स्टार A मतलब 10 प्लस 3 13 वहीं पे स्टोर हो रहा है, वहीं पे स्टोर हो रहा है। चेक करना गाइस, कभी कभी ऐसे होता स्टार ऑफ ए प्लस 2 इज इक्वल स्टार ए प्लस 3, ये कुछ अलग है गाइस, दिस इज डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, ए प्लस 2 मतलब ए ऑफ 2 इनडायरेक्टली, ये किस लोकेशन में जाएगा, ये 30 लोकेशन में। तो 30 रिप्लेस्ड विथ 10 प्लस 3 13, ये 13 बनता। याद रख लेना गाइस, ये गेम बहुत डिफरेंट है ना। ऐसे लिखा तो कुछ अलग बनता, तो सही से देख लेना लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है। ये स्टार है, ये स्टार ये प्लस 3 है ना, 13 अपडेट हुआ। ए ऑफ 3 फिर भी तो सेम है, 40 तो है, कुछ अपडेट तो नहीं हुआ। अपडेट तो ए ऑफ 0 किया, पूछ रहे ए ऑफ 3 हो, है ना, फिर भी 40 है। एवरीबॉडी अगर पूछ लिया ए ऑफ 0 है तो आंसर 13 दिखता है ना। तो here also we are updating the array, but लेकिन पूछ रहा है जो अपडेट नहीं हुआ। yes, and consider the following declarations। int star a, assume the size of integer is 4 bytes, integer की साइज है गाइस, address size 4 bytes, मतलब आप कुछ अलग भी मानना पड़ेगा। मैं तो दोनों सेम लिया, दोनों सेम लेना जरूरत नहीं है। find the value printed by the size of a, size of a, ये साइज ऑफ एड्रेस की प्रिंट होगा, इंटीजर की है, दोनों 4 बाइट्स है, दोनों 4 बाइट्स है, बट इंटीजर का नहीं है, ये इज
This 4 bytes is going to print because A is going to hold the address, not an integer. Int A अलग है, int star A अलग है. This is size of int, this is size of address. Guys, ये तो 4 bytes तो सही है आंसर. In case ये 4 को 8 किया तो अब 8 मानना पड़ेगा आंसर. Everybody, तो this size of A is not size of int, it is a size of address. It is a size of address. Everybody, so understand the importance of this addresses. If the size of integer and address both are same, आपको confusion कभी नहीं मिलेगा. लेकिन if the integer size address sizes are different, तो confusion मिलेगा. Okay, अब देखो, अब B है, B का साइज, B के अंदर एड्रेस ही स्टोर होगा. वो सिंगल पॉइंटर है, डबल पॉइंटर है, हमको मतलब नहीं होता. लेकिन B के अंदर एड्रेस है. व्हेन यू आस्क साइज ऑफ B, ये 4 ही होगा, ये 4 ही होगा. अगर यहाँ 8 है तो 8 ही होगा. इज इट क्लियर? या क्लियर एवरीवन? या सेम आंसर. कुछ भी गाइस एक बार लिख लेते. इंट स्टार A, क्यार स्टार B और फ्लोट स्टार C, और लिखो इंट स्टार स्टार P, और लिखो इंट स्टार 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 Q. सारे सेम है गाइस. साइज ऑफ एड्रेस नेवर चेंजेस. साइज ऑफ A इज इक्वल टू साइज ऑफ B इज इक्वल टू साइज ऑफ C. ये सारे सेम है गाइस. साइज ऑफ एड्रेस कभी चेंज नहीं होता सिस्टम में. इज इट क्लियर? इसको समझना इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, नाउ ये अब आ गया. C is what guys? This is C is pointer. Pointer किस टाइप की पॉइंटर है? C is pointer to array. ये किस टाइप की array है? C is, आप धीरे धीरे समझ लेना गाइस. एक बार कभी कभी बड़ी हुई सेंटेंस पढ़ना बहुत मुश्किल होता, उसके लिए एक एक पढ़ लेना. C is pointer to an array of 2 integer elements. This is the pointer, points to an array, and that array has 2 elements, 2 integer elements. तो CB भी pointer है guys. यहाँ भी एड्रेस ही स्टोर करना. array स्टोर नहीं करेंगे हम, एड्रेस ही स्टोर करेंगे. Everybody, then printed by the size of C, वो एड्रेस ही प्रिंट होगा. B प्रिंट होगा. Come on, B 8 what 4 है ना? Sorry, मैं कभी गलती करता हूँ गाइस. साइज ऑफ C क्या है? ये एड्रेस है ना. एड्रेस साइज क्या है? 4 बाइट्स है गाइस, नॉट 8. Come on, it's 4 only, just address. मैं यहाँ देखे 8 देखे मैं बता रहा हूँ, लोग 8 कर रहा है. C is pointer, not an array. पॉइंटर मतलब एड्रेस स्टोर करेंगे हम. आप जो भी हो, इंट स्टार C ऑफ 2 हो, और इंट स्टार D ऑफ 3 हो, इंट स्टार F ऑफ 4 हो, तो C के अंदर एड्रेस ही होंगे, लेकिन एड्रेस ऑफ एरे होंगे दैट हैज 2 एलिमेंट्स. यहां भी एड्रेस ही होंगे. एवरीबॉडी गाइस, या साइजेस चेंज नहीं होगा. ये भी नो. C is a pointer, not an array. इसको बोलना पड़ेगा इन लोगों को, दिमाग का. इंट C ऑफ 2 है, इंट स्टार C ऑफ 2 है, इंट स्टार C ऑफ 2 है. एक बताता हूं डिफरेंस क्या है इस तीनों में डिफरेंस क्या है. C यहां पर देख लें. अस्यूम एड्रेस साइज इज क्या मानो 2 बाइट्स मान ले. अब नहीं तो 4 बाइट्स. अब तक तो 4 मान रहा है ना. इंटीजर साइज 2 मान ले. इज इट क्लियर? तो C is having 2 integers. साइज क्या होगा? साइज ऑफ C क्या होगा? ये 2 एलिमेंट्स है ना, तो 2 into 2 यहां 4 बनेगा. 2 into 2
जो 2 एलिमेंट्स है ना, इसके लिए 2 बाइट्स है, इसके लिए 2 बाइट्स है, और इसके लिए क्या है, सी तो पॉइंटर है, ये सिर्फ एड्रेस ही होंगे। किसके एड्रेस, आप बताओ। सी इज इक्वल एड्रेस ऑफ कुछ ऐसे वाली ए है, तो ऊपर कुछ होंगे ऐसे इंट ए ऑफ 10 होंगे, तो मतलब ये सी इज विल पॉइंट टू दैट एरे एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0। ऐसे करना पड़ेगा आपको, वो एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 स्टोर होगा, है ना। तो दिस विल पॉइंट, ये ए को पॉइंट करेगा, यहां 10 एलिमेंट्स है 0 to 9, तो ये सी क्या मानेगा, इट इज ट्राइंग टू पॉइंट टू द 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम, बट एड्रेस तो फर्स्ट एलिमेंट की है, बट सी के अंदर एक एड्रेस होगा। आप क्यों कंप्यूट कर रहे हैं 2 एलिमेंट की साइज, ये तो पॉइंटर है, पॉइंटर टू एरे ऑफ 2 एलिमेंट्स, एंड इसका सी साइज क्या होगा, अभी साइज ऑफ सी क्या होगा गाइस, साइज ऑफ सी 4 होगा। अगर मैं साइज ऑफ ए पूछा, वो 10 into 2 20 होगा, 20 बाइट्स होगा। एंड ये क्या है, ये लास्ट वाली क्या है, कुछ अलग ही है। वो सी तो एरे है, इसके अंदर सॉरी सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, यहां पर एड्रेस स्टोर करेंगे, यहां पर एड्रेस स्टोर करेंगे। अभी साइज ऑफ सी कुछ अलग ही है, वो 2 एड्रेसेस, मतलब ये इसका 4 बाइट्स है, इसका भी 4 बाइट्स है, और 4 2 into 4 8 बाइट्स। इज इट क्लियर। तो गलती से आप दी पॉइंटर टू एरे को एरे नहीं मानना है आपको, पॉइंटर टू एरे इज आल्सो पॉइंटर। कोई भी पॉइंटर दुनिया में वो साइज ऑफ एड्रेस ही होंगे ना। अब क्यों कंप्यूट कर रहा है 888, ये तो पॉइंटर ही बोल रहा हूं, एरे नहीं बोल रहा हूं, पॉइंटर ही बोल रहा हूं। जब पॉइंटर हो, दुनिया में हर पॉइंटर सेम साइज होता, अलग नहीं होता कभी। पॉइंटर के अंदर सिर्फ एड्रेस ही स्टोर होता। एवरीबॉडी कम ऑन, 4 ही होंगे एवरीबॉडी, इसलिए मैं ये देना पड़ा, ये अलग रिप्रेजेंटेशंस की खेल है, समझ है ना इन तीनों को। ऑलराइट, now 39 and start t of 3, assume the size of integer is 4 bytes, और दोबारा 4 बाइट्स है, ठीक है। साइज ऑफ डी, अभी तो कहा ये डी ऑफ 3 है अभी, है ना। इसके अंदर पॉइंटर्स है, मतलब एड्रेसेस है, ये एड्रेस है, दिस इज एड्रेस। ये 4 बाइट्स होंगे यहां पर, है ना, साइज 4 बाइट्स होंगे, मतलब वो इंटीजर की 4 बाइट्स नहीं, एड्रेस की 4 बाइट्स है। अगर एड्रेस 8 बाइट्स है, एड्रेस साइज, देन 8 into 3 करना पड़ता आपको, 12 तो आया, but because of not integer, because of address everybody। अभी 4 bytes because of address sizes, है ना, right। तो clearly understand, because most of the programs we assume size of address and size of integer we assume same, उसकी चक्कर से हमको समझ नहीं आता किसकी डील कर रहे हैं हम, या अब देखो, ये तो कहा आपको बोलना जरूरत नहीं है, ये तो ये पॉइंटर्स है, तो तीनों में तो एड्रेस ही होंगे, एड्रेस ही होंगे पक्का। तो इफ आई आस्क साइज ऑफ ए बी सी, सेम साइज आना चाहिए, सेम साइज आना चाहिए। व्हाट साइज, एड्रेस साइज इज 2 बाइट्स, तो हमको ये आंसर आएगा बी। तो सीधा देखना है आपको, ए मतलब एड्रेस होल्ड्स, बी सी 3 pointers will have the same sizes, है ना everybody। come on quick, 2 2 2 2 2 2, because we are dealing with address, yes, but ये चेक करना पड़ेगा, ये कुछ अलग ही खेल है ना। साइज ऑफ ए तो साइज ऑफ एड्रेस की बात है, बट साइज ऑफ स्टार ये कुछ अलग है, साइज ऑफ बी अलग है, साइज ऑफ स्टार बी अलग है, साइज ऑफ सी अलग है, एंड साइज ऑफ स्टार सी अलग है। स्टार सी मतलब that is a data at that address, this all are nothing but address sizes, but these are data size here,
डेटा नॉट एड्रेस। ये तो इंटीजर डेटा, ये तो कैर डेटा, ये फ्लोट डेटा है ना। डबल पॉइंटर तो कुछ और हो गया गेम, ये तो सिंगल पॉइंटर की बात कर रहा हूं मैं। ना इंटीजर क्या है दिया हुआ कहीं पर, या 2 बाइट्स, 2 बाइट्स, कैरेक्टर 1 बाइट, फ्लोट 4 बाइट्स। ये ऑर्डर साइज तो हमेशा सेम होंगे, दिया हुआ 2 बाइट्स। तो हमको स्टार या स्टार भी प्रिंट करना है ना, 2 1 4। तो कहां पर है, ये बी सी, ये बी सी, ये सही तो प्रिंट किया ना। इंटीजर 2 बाइट्स, यहां मैच नहीं हो रहा है। वाई इज ऑप्शन ए 2 1 4 है ना, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। इंटीजर तो 2 बाइट्स है ना गाइस, ये तो 1 किया है ना। एवरीबॉडी कम ऑन, ऑप्शन नहीं है यहां पर। 1 2 4, सर 2 1 4 इज आंसर, 2 1 4 इज एन आंसर, 2 1 4 वो ऑप्शंस में नहीं है। ऑलराइट, none of this is there, don't choose Mahmuda, A is wrong. Come on, why are you saying 1 2 4 Mahendra? Why? You will order according to you, है ना। ये कैरेक्टर के, ये की कैसे होगा, गलत है। Come on, none is right answer, don't do the mistakes यार। फर्स्ट वन इज अ कैरेक्टर, हमको इंटीजर चाहिए ना, स्मॉल ए इज इंटीजर है ना, इंटीजर पॉइंटर या ओके। एंड ये दोनों सेम है क्या, वी हैव 2 असाइनमेंट्स। एक बार देख लेते क्या मीनिंग है गाइस। ए इज एन अरे, इसके अंदर गेट एग्जाम स्टोर हो गए। यू आर असाइनिंग द स्ट्रिंग ओनली राइट, तो इट विल असाइन सिमिलरली बट नल कैरेक्टर इज देयर रिटर्न। ये है बी, ऐसा नहीं होता, बी तो एड्रेस होता। बी के अंदर सपोज 100 होगा, ये 100 ये किसी लोकेशन में होंगे, ये 100 है, ये तो कुछ और है, इसको 200 मान लो। डोंट अज्यूम दैट एड्रेस हियर, इट्स गलत है। दोनों सेम प्रिंट नहीं करता राइट। You can update the array A, but you can't update the array which is pointing by B. Both are different here. Yeah. First one is array of characters, and second one is the pointer to a string. Here you can say that a pointer to a string. This is array of, it's a array of characters. सेकंड वाला ऐसे भी कर सकते, पॉइंटर टू स्ट्रिंग क्यों करना है, नहीं गलत है वो भी। पॉइंटर टू कैरेक्टर अच्छा है, पॉइंटर टू कैरेक्टर। ये पॉइंटर को मालूम नहीं पड़ता ये स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, ये अज्यूम करता पॉइंटर टू कैरेक्टर ही है, इसलिए 100 को होल्ड कर लिया, पूरा स्ट्रिंग को होल्ड नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर के एड्रेस। तो ये है बी इज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर, पॉइंटर टू कैरेक्टर, बट वो डील करता स्ट्रिंग से। या exactly, static memory, exactly. This address, it is a constant, nobody can change the values of this data, no one can change, it's a constant. But लेकिन ये constant नहीं है, you can change, we can edit the data if you want, we can edit, कैपिटल जी को कैपिटल एक्स से रिप्लेस करो हो जाएगी। पर लेकिन जो ये बी होल्ड कर रहा है एड्रेस, उस स्ट्रिंग कोई अपडेट नहीं कर सकता। ऑलराइट, in the first definition the string is terminated by null character, सही है, whereas in the others is not, वो गलत है। second definition string is terminated by null, other is not, ये भी गलत है। can be modified, ये देखो in the first definition the string can be modified anywhere, whereas in other we cannot modify the first, oh we can modify, ये भी गलत है। we cannot modify any character, क्या लिखना चाहिए था, we cannot modify any character in the second, तो D is right, none of this guys। first string, that is character A, here you can update anything, but B जो point कर रहा है you can't update this one, and here both are different but both look same। all right, the following program produces a runtime error due to, guys ये तो P है ना,
P के अंदर पहले गार्बेज होगा। जब स्टार P कर रहा है तो इसका मीनिंग स्टार गार्बेज, वो तो कुछ भी हो सकता है ना दुनिया में, है ना। दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम एंड यू कैन से वेरी डेंजरस एरर। वाइल्ड पॉइंटर, वाइल्ड मतलब अनइनिशियलाइज्ड, because of uninitialized pointer, ये bad pointer, you can have another name, bad pointer, everybody. So this is because of wild pointer. Because of wild pointer, here it will produce runtime error. This statement is going to be executed at runtime. कंपाइलर को समझ में आता है, तो रन टाइम में सिस्टम जब एग्जीक्यूट कर रहा था, स्टार ऑफ address, it's not address at all, garbage value. Yeah. Now following program produces runtime error due to, ये देखो P के अंदर null मतलब जीरो गाइस। ये सिस्टम में ये रैम के अंदर ये एड्रेस जीरो होता, पता है ना। दिस इज फर्स्ट एड्रेस, बट दिस इज no one can read it, no one can edit it, no one can modify, because the address is for the operating system. Starting few addresses is only operating system is going to use for indexing some other things, right? So star P is equal null is not allowed by that equal null, okay, it's fine, but star P is equal 10 in the sense you are trying to update that star 0 address is equal 10 its address, then operating system not allows, it's going to be error, it will terminate your program guys. This is a null pointer problem. Because of null pointer you are trying to dereference, null pointer dereference, the problem name is null pointer, you are trying to dereference, वो कभी नहीं होगा everybody। null pointer को कभी dereference नहीं कर सकता। then why do we use null pointer? null means zero address guys। null is a predefined macro constant, predefined, इसको आपको चाहिए, null की जगह में आपको कुछ और लिखना है, लिख सकते हैं star P is equal int star 0, इसका मीनिंग है is exactly same as this is null। null तो ऑलरेडी डिफाइंड था तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं। तो इफ यू वांट राइट ऑन योर ओन इन प्लेस ऑफ null यू कैन राइट int star of 0, मतलब 0 इज द इंटीजर वैल्यू, उसको एड्रेस में कन्वर्ट कर लिया। एवरीबॉडी यू कैन डू दैट ऑन योर ओन। आपको null पसंद नहीं आ रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या null की जगह int star of 0 लिख सकते हैं कि 0 को हम एड्रेस बना लिया। 0 is integer value but int star of 0 ये एड्रेस, पता है ना गाइस सबको, एड्रेस एंड इंटीजर बोथ आर डिफरेंट इन आवर प्रोग्रामिंग एवरीबॉडी, दोनों अलग है, दोनों अलग है। क्लियर दिस पॉइंट एवरीवन? यस, समझ लेना गाइस। This program produces runtime error due to what? Due to what? So P is local, P is a local to the main and पहले तो garbage था, ठीक है रहने दो, और X इसी के अंदर होगा, जो ब्लॉक है ना उसी के अंदर होगा। मतलब आप मेन है, इसकी दो स्कोप है, इसके अंदर दो स्कोप है गाइस। ये P तो यहाँ की स्कोप की है, इसके अंदर गार्बेज है, और X तो इसके अंदर की है, इसके अंदर 10 है। P तो असन की एड्रेस ऑफ X, तो करेंगे तो मान लो 1000 है, तो गार्बेज के अंदर 1000 स्टोर किया, और जब बाहर आके स्टार P इज इक्वल 20 कर रहा है, मतलब क्या हो गया, स्टार ऑफ 1000 कर रहा है, स्टार ऑफ 1000, बट लेकिन 1000 तो डिलीट हो गया। पता है व्हेन यू आर टर्मिनेटिंग, व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस ब्लॉक, मेमोरी फॉर X इज डिलीटेड, मेमोरी फॉर X is destroyed, सबको पता होगा ना, ये पूरा डिलीटेड है। तो you are trying to access the address which is not exist in user space, ये आपकी एड्रेस नहीं होगा, अभी होगा तो भी कुछ और आपको परमिशन नहीं है। इज इट क्लियर? तो दिस इज गोइंग टू बी द डैंगलिंग पॉइंटर, डैंगलिंग रेफरेंस। व्हाई? The P is accessing the address which was valid at some point of time, but at this time it is invalid. Is that clear? It is pointing to address तो valid है, system में तो valid है,
बट लेकिन यूजर प्रोग्रामिंग में इट इज इनवैलिड बिकॉज इसका ये यूजर की स्पेस नहीं है, इट इज डिलीटेड फ्रॉम यूजर स्पेस नाउ. In case even it is user space, it might be given to somebody else. You don't have the permission in this scope. Yeah. Void pointer means it is uninitialized. ये तो initialized है ना, तो समझ लो यार, इनको समझ नहीं आता क्या? Int star p, see the star p is equal 20 किया, ये wild है, ये wild है, क्यों बिना initialization से कर रहा है? तो initialization तो हुआ ना, initialize तो हुआ ना, या initialize तो हुआ ना, p is initialized. बट लेकिन जो एड्रेस है वो इनवैलिड है अभी. एवरीबॉडी, वर्ल्ड पॉइंटर इज द पॉइंटर विदाउट इनिशियलाइजेशन, यू आर डूइंग दैट. बट ये तो इनिशियलाइजेशन करने के बाद स्कोप से बाहर आया तो इसलिए वो एड्रेस इनवैलिड हुआ. अगर इस ब्रैकेट्स को हटा दिया तो सही चलेगा, क्यों दोनों की स्कोप सेम है, यू कैन डू दैट. बट अभी स्कोप अलग है, क्यों एक्स डिलीट हो गया. इज दैट क्लियर? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम x not exist, but you are still pointing to that location previously that x was allocated. Yeah, dangling pointer. Come on, 3 pointers I have discussed. पहली बार जो देख रहा है dangling pointer, समझ लेना इसको. बहुत सारे एग्जांपल से dangling के लिए. All right. What is the output of the following code, guys? x local है 5 minus 1 4. x is equal 0 रिटर्न, 0 तो नहीं है ना, तो ऐसा नो मेन एग्जीक्यूट करेंगे तो मेन विल कॉल मेन अगेन. लेकिन बाद में गाइस आपको याद रहना चाहिए 5 को तो 4 बनाया तो मेन वी आर कॉलिंग इट अगेन, रिटर्न आने के बाद प्रिंट तो करना है x को. तो जाएंगे वहां पर मेन, x दोबारा 5 होगा, दोबारा 4 बनेगा एंड मेन दोबारा कॉल होगा. क्यों ऐसे हो रहा है? व्हाई दिस इज हैपनिंग ऑलवेज? x इज 5 बिकॉज x इज ऑटो वेरिएबल क्रिएटेड लोकली ऑन द स्टैक इट इज क्रिएटेड. तो इसलिए ये दो मेन फंक्शन की x अलग मेमोरी में क्रिएट हो रहा है. अगर आप उसको स्टैटिक बनाया कुछ होंगे पक्का, इजीली होंगे. अब मेन कॉल्स recursively infinite times, so it's going to be error at runtime. Everybody, error at runtime, stack overflow. क्यों? main calls main infinitely. Yes, तो infinite recursion, it's a stack overflow. क्या होता? क्यों why it is stack overflow? ये main था, ये इसके अंदर x का वैल्यू 5 और 4, दोबारा मेन आएगा, इसके अंदर भी x is 5 and 4 एंड ये होता रहेगा. यस, अब नॉर्मल टर्मिनेशन, प्रोग्राम टर्मिनेटेड अब नॉर्मली बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? यस, गुड. तो अब बताओ, अब स्टार्टिंग वेरिएबल है ना, इसको पहले ही बना लो. क्यों? सारे मेन फंक्शंस इसी को एक्सेस करना पड़ता, लोकली क्रिएट नहीं कर सकता उसको. तो अब स्टार्ट कर लो. मेन x इज इक्वल x माइनस 1, ये ऑलरेडी लिंक तो बना हुआ ना, तो 4 होगा भाई, 5 4 होगा एंड x इज 0 तो नहीं है, तो दूसरा मेन कॉल होंगे. आने के बाद प्रिंट एग्जीक्यूट कर लो गाइस. मेन पे दूसरा पे जा रहा हूं, मेन दूसरा फंक्शन कॉल, यहां भी मेन है तो इसको कॉर्नर लगा लेते हैं हेडिंग को, और ये भी इसी को एक्सेस कर रहा है. एंड x इज इक्वल x माइनस 1, दोबारा 4 3 बनेगा एंड उसके बाद मेन को कॉल करेंगे. बने आने के बाद प्रिंट करो सीधा एंड मेन, एंड ये भी इसी को देख रहा है. तो x इज इक्वल x माइनस 1 किया दोबारा तो 3 2 बनेगा, 2 इक्वल टू 0 तो फेल होगा, तो मेन दोबारा कॉल करेंगे और आने के बाद प्रिंट तो करो गाइस, डोंट फॉरगेट, रिटर्न आने के बाद एंड मेन. तो ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है एंड x इज इक्वल x माइनस 1 तो है, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो 2 1 बनाएगा, 1 इक्वल 0 फेल होगा, तो मेन को कॉल करेंगे एंड आने के बाद प्रिंट करो गाइस, मेन दूसरा मेन.
एंड ए भी उसी x को पॉइंट कर रहा है, याद रख लेना। एंड x इज इक्वल x माइनस 1 एग्जिट करो और 1 को 0 बनाए, 0 इज इक्वल 0, दैट ट्रू बन गया, रिटर्न। अब रिटर्न करने की बाकी है, तो दिस फंक्शन विल रिटर्न वेयर इट वाज कॉल्ड, इट रिटर्न्स हियर। तो प्रिंट x, ये क्या प्रिंट करेगा, x का वैल्यू 0, और इसके बाद यहां रिटर्न करेंगे, ये भी प्रिंट करेगा 0, ये भी प्रिंट करेगा 0, बिकॉज एवरीबॉडी सीज अपडेटेड x ओनली। तो कितने बार 0 0 0 प्रिंट होगा, 4 टाइम्स। So none of this is answer. Output is basically, output is 4 zeros. ये ऑप्शन नहीं है। अगर printf ऊपर लिखा, आंसर होगा यहां पर 4321 होता गाइस। अगर ये printf है, in case if it is there here, तो होगा 43210, 43210, और यहां लिखा 4321 होता गाइस। अगर यहां लिखा 543210 एंड printf the position of the printf output is going to be affected। मैं तो बोलने वाला हूं, देख लेना गाइस। अगर यहां printf है, आउटपुट क्या होता, 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता। जब 0 आएगा वो नीचे नहीं आएगा। अगर यहां पर है तो पहले 4 होगा, क्यों 5 माइनस 1 होगा, 3 2 1 0 भी प्रिंट होगा बिफोर चेकिंग। अगर यहां पे है तो 5 पहले प्रिंट होगा, बाद में डिक्रीमेंट होगा, 4 3 2 1 0। देखो प्रिंटफ अलग अलग जगह में अलग अलग आउटपुट आएगा। एवरीबॉडी क्लियर? यहां पर है तो 0 0 0 0 आ रहा है। सी डिफरेंट प्रोग्राम्स दे कैन हैव अ printf at different places, but output आप प्रैक्टिस कर लेना गाइस। तो व्हाट विल बी द आउटपुट इफ द printf पोजीशन इज चेंज्ड। तो ये होमवर्क है आपके लिए, आप 100 प्रोग्राम बना सकते हैं ऑन योर ओन। पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। ऑलराइट, 48 स्टैटिक इंट x। तो ये पहले ही डिस्कस करेंगे। देखो printf अब ऊपर आया, अभी तो काम है, printf ऊपर आएंगे तो आउटपुट क्या होगा, मैं तो दिखा रहा हूं। अभी x5 है ना, सीधा एग्जीक्यूट कर रहा हूं गाइस। क्यों अभी एग्जीक्यूट किया ना, अभी एग्जीक्यूट किया ना। मेन कॉल करने से पहले प्रिंट होके जाएंगे हम, यहां प्रिंट होके जाएंगे। यहां पर अभी प्रिंट है गाइस, यहां पर अब प्रिंट है ना। तो यहां क्या प्रिंट होगा, यहां क्या प्रिंट होगा, कंडीशन चेक करने के बाद 4 3 2 1, ऐसा नो 0 नहीं आएगा ना, 4 3 2 1 एवरीबॉडी। तो यहां पर है पहले 4 प्रिंट होगा, देन 3 प्रिंट होगा, 2 1। 0 कभी प्रिंट नहीं होगा, क्यों, ये कंडीशन अगर 0 है तो यहां नहीं आएगा, रिटर्न होगा जब 0 है। या 4 3 2 1, यही तो समझना है आपको। प्लीज ट्राई टू डू दैट। अभी तो बोला मैं, प्रिंटफ अगर ऊपर है तो 4 3 2 1 होगा। क्यों, मेन कॉल करने से पहले प्रिंट करके हम मेन में जा रहे हैं ना। इफ मेन इज देयर यू आर कॉलिंग मेन, तो देयर आर प्रिंट, पहले 4 होंगे उसके बाद मेन, और मेन पे जाएंगे ना, पहले प्रिंट 3 करेंगे उसके बाद मेन, है ना। तो 5 को 4 बन के प्रिंट करेंगे, 4 को 3 बना के प्रिंट करेंगे, और 3 को 2 बना के प्रिंट करेंगे हम। एवरीबॉडी यस, 4 3 2 1। प्लीज क्रॉस चेक एंड डू इट योरसेल्फ। लेट्स मूव। 49 फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। स्टैटिक इंट x इज इक्वल 5। तो ये तो आपको पहले ही डिलीट कर लो, बट लिख लेना x इज 5, दिस इज ऑफ f। ये इंट x इज इक्वल 0 है, अगर ये भी स्टैटिक होगा ना उसको भी हमें डिलीट करना पड़ता है, लेकिन ऑफ मेन लिखना पड़ेगा। बट ये तो लोकल है, चलेगा। तो स्टार्ट कर लेना गाइस। मेन वी आर एग्जीक्यूटिंग, x तो 0 है लोकली, पहली स्टेटमेंट x इज इक्वल x प्लस f। तो 0 प्लस, पहले f को कॉल कर लेते हैं, f को कॉल कर लेते हैं। ये f है, f के अंदर क्या, x इज इक्वल x माइनस 1, ये 4 बनेगा। रिटर्न x, मतलब यहां रिटर्न 4 बनेगा, 4 रिटर्न हुआ। इज क्लियर? तो 0 प्लस 4, तो 4 बनेगा यहां पर। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट टाइम x इज इक्वल x प्लस f, दोबारा f फंक्शन कॉल, बट दिस टाइम f is going to be created again
बट अब x इज इक्वल x माइनस 1 एग्जीक्यूट करो, 4 को 3 बनाएगा, अब रिटर्न 3। इस दोनों में डिफरेंस क्या? बोथ कैन सी सेम x। ये लोकल x है बट लेकिन द मेमोरी इज देयर इन द डेटा रीजन। ये ग्लोबल नहीं है, x तो लोकल की है but लेकिन मेमोरी क्रिएटेड ऑन द डेटा रीजन, बोथ विल एक्सेस द सेम x, है ना? या ग्लोबल नहीं बोलना है x को, डेटा रीजन, ये स्टैटिक इज क्रिएटेड इन द डेटा रीजन। यस, ये 3 रिटर्न करेगा तो 3 आएगा, बट x ऑलरेडी 4 था, 4 प्लस 3 7 अपडेट होगा। when you print x it will print 7। yes, C is the right, correct, C is the right। yeah, and guys, please keep on liking this session. I know you can see the effort is not recognized by very less people, and those people who are having negativity, they always keep on doing negativity in their life, and somebody will dislike them too, right? Remember that those people who dislike, basically they are also be disliked, but someday, right? They don't realize when somebody dislikes them, they will understand what is the importance of that। but if you are enjoying our sessions, please keep liking our sessions, do not forget, right? अगर कोई दो डिसलाइक कर रहा है, 200 लाइक आना चाहिए गाइस, राइट? इतना एफर्ट, इतना सपोर्ट होना चाहिए when you are liking somebody। yes, find the output of the following code। अब देखो ये लोकल वेरिएबल है तो कुछ नहीं करना आपको, f के अंदर ही क्रिएट होगा, f के अंदर ही, f से जब f से बाहर आता डिलीट होगा ऑटोमेटिकली। स्टार्ट द कोड गाइस, मेन एग्जिट कर लो, मेन तो एडिंग डाल दे, x के अंदर 0 और x इज इक्वल x प्लस f, दो स्टेटमेंट है और उसके बाद प्रिंट करेंगे हम, एंड f इज गोइंग टू बी कॉल्ड। इससे पहले क्या हुआ गाइस, x तो डेटा रीजन में क्रिएट हुआ, अब ऐसे नहीं होगा, ये अंदर क्रिएट होगा, क्यों? इससे लोकल। अब x इज इक्वल x माइनस 1, 4 बनेंगे और रिटर्न x, 4 तो रिटर्न करेंगे, तो 0 प्लस 4 इज 4, एग्जिट हो गया। नेक्स्ट f, ये दूसरा f है और इसकी x अगेन 5 और ये 5 4 बनेगा, ये भी 4 रिटर्न करेगा, ए भी रिटर्न 4 करेगा, सो 4 प्लस 4 अब 8 बनेगा, सो प्रिंट 8, सो 8 विल बी प्रिंटेड नाउ, सो नन ऑफ दिस, आउटपुट इज 8। क्लियर दिस पॉइंट? या चलो, क्या है नंबर? ओके 50। Now guys, we have done 50 problems so far, 50 problems। now tell me guys, are we already it's 10:25, can we take the remaining 50 problems in the next session on the next Saturday or next some other day, so that will become part 2? Out of 100 questions we have completed one part, because आपको भी पता है you have most, this is the most crucial time for exam, and out of 100 questions we have done 50 questions, and remaining 50 we will take in another session, and that is also same heading, 100 questions. So remaining 50 questions we will do in part 2. Is that clear? Part 2. So same heading I am going to keep, so remaining 50 problems I am going to handle in the second session. Is that clear? So we have done yeah, it's better to Satyajit, today if possible, but I know 100 problems I can do it now, but even I have to take the class tomorrow morning, early morning, so let's have this session, another session, 100 questions on same heading, but second video will come out, possibly not tomorrow, some other day. Yeah, definitely I will come with other 50 questions also. Clear? But that time we will solve most of the gate questions. Is that clear? So in that 100 questions I may go beyond more than 50 questions in the second part,
But remember, somebody asking me, sir, solve the gate questions. Yes, I'm going to do almost all the gate questions in the second part, because now you will know how to tackle the previous year gate questions. Is it clear? तो जरूर अटेंड कर लेना नेक्स्ट सेशन. Then we will follow that next part 2 in soon. I will announce on this, I will announce in the groups too. Please follow my class, and this is my profile. Please follow me, and we have very good educators on this channel. Please keep following us and keep liking our sessions, and we will be having more interesting sessions, like we will be having more important sessions like this. And please support us and like the sessions. And if anybody interested to come to the Unacademy, we will have more interesting sessions even on Unacademy. So use this code to get the subscription. And thank you so much. Like, share and subscribe. Yeah, thank you so much. Bye bye. Yeah, thank you Piyush, Bharat, Satyajit, thank you. Yeah, Nishu, actually tomorrow I have some other work, so I'm not having any YouTube class, so that is why. Yeah, Sulvi, thank you so much. Jay, thank you. Yeah, Nishu, thank you. Yeah, Mahindra, Rahul, thank you. Kushi, thank you. All right, chalo, bye bye, take care.